Hello, 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 hello. You are back with the third day. Uh, so let us continue. Okay, 500 by 100. कितने मिनिमम स्टेप्स? अच्छा, ये खोला तो था। आई थिंक बस ये सवाल पढ़ के हम कराना जैसे। ओके, सो स्टार्ट है एंड है। ये था सवाल। एंड देन mod is to get the new start. End can be achieved starting from start. अच्छा, तो हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रनिंग नंबर, ओके। तो सिंपल डाइस का है। हमारा नया नोड है, लेकिन हमारा एंड कैसे होगा? हाउ डू यू फाइंड कि मान लो हम पहुंच ही नहीं सकते कभी। राइट, अगर हम पहुंच ही नहीं सकते तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? अब क्यों मल्टीप्लाई तो मैं करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ। या एक्चुअली में ऐसा थोड़ी है, तुम पहुंचोगे तो एक सेम ही नंबर पे पहुंचोगे, तो तुम सेम ही नंबर पे। राइट, तो उस नंबर पे तुम कितने स्टेप्स में पहुंचोगे? एक टाइम पे तुम्हारे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। तो प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल टू, अब इसमें इंपोर्ट पहले करना पड़ता है। इंपोर्ट ई क्यू फ्रॉम, ठीक है ठीक है ऐसे। तो हम स्टार्ट करो अपने स्टेप। स्टेप वन था 3 into 2, या तो स्टेप जीरो का है शुरू। जीरो का मैं स्टार्ट यहाँ पे हम, ठीक है। वाई प्रायोरिटी क्यू, हमको मॉड किससे करना है? दो, तीन, 1 2 3 4 5, इंडस्टर 5 से। mod is equal to 10 restore 5, right?
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इंफिनिटी। अब कितने पॉसिबल नंबर्स तुम मॉड कर रहे हो 10⁵, तो तुम्हारे सिर्फ इतने ही पॉसिबल आ सकते हैं, राइट? और नहीं हो सकता कुछ, और कुछ नहीं हो सकता। इंटू इंटू मॉड, जीरो से लेके, या जीरो से लेके 10⁵ देन आई कैन से डिस्टेंस ऑफ start is equal to 0. Can I say this? I can. I can say this. I definitely can say this. तो मैं बोलूँ प्रायोरिटी क्यों जब तक है, क्या करो? तो फिर तुम्हारा सबसे कम स्टेप वाला है, स्टेप्स कॉमा नंबर इज इक्वल टू हीप क्यू डॉट हीप ऑफ प्रायोरिटी। इफ नंबर is equal to, and then we can just return our steps, right? वरना वरना फॉर मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड ही आता था, फॉर मल्टीप्लिकेंड इन अरे नेक्स्ट नेक्स्ट नोड ही बोल दो, नेक्स्ट नंबर बोल दो, नंबर इज टू नंबर इनटू मल्टीप्लिकेंड, राइट? ये हो गया हमारा क्या, ये अपना हो गया मल्टीप्लिक नेक्स्ट नंबर, राइट? इफ स्टेप्स प्लस वन इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नंबर, अगर ऐसा है, हम वी आर एबल टू रीच इन द न्यू नेक्स्ट स्टेप, राइट? अगर ऐसा होता है स्टेप्स प्लस वन अगर लेस देन है, ठीक है, तो क्या करो, राइट क्यू में डाल दो, क्यू डॉट पुश पुश राइट क्यू कॉमा स्टेप्स प्लस वन कॉमा नेक्स्ट नंबर, एंड देन डिस्टेंस ऑफ दिस नेक्स्ट नंबर, एक और चीज़ करनी चाहिए, इज इक्वल टू स्टेप्स प्लस वन, नेक्स्ट नंबर में ये करने के बाद मोड भी करना, राइट? अब हमने ये भी कर लिया, हमने कर लिया ना ये भी, ओके। आई थिंक मे बी हम इसे बी एफ एस से भी कर सकते थे, हाँ बी एफ एस से भी हो सकता है, क्योंकि सबका रेट तो है नहीं, सबका एक एक स्टेप ही है, बट चलो आई डोंट थिंक सो डाइस का से भी गलत आएगा, क्योंकि लॉग वही तो बढ़ जाएगा, लॉग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, अगर ये है ऐसी बात है, देन वो चला जाएगा, और करने के बाद अगर हमको कहीं नहीं मिला, देन वी कैन रिटर्न -1, विल दिस वर्क दिस, मे बी एक ओके नहीं है, बट दिस इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमाइज, इसको बी एफ एस से कर सकते हैं, तो फ्रॉम कलेक्शन कोड पी क्यू,
एक सेकंड देना। हाँ, तो BFS से करने के लिए हमने क्यू में वी कैन मेक एज अ डी क्यू इसका इक्वल्स टू 0 कॉमा स्टार। नाउ वी कैन से visited is equal to set of start, right? Now I can say while क्यू है, अभी तक मेरा कॉस्ट क्या है, मेरा कॉस्ट 0 है, तो while क्यू n is equal to len of for whatever in range n steps comma number is equal to क्यू से पॉप कर लो, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, राइट? आफ्टर पॉपिंग समवेयर अगर ये नंबर अगर एंड के बराबर है वी कैन जस्ट रिटर्न आवर कॉस्ट। अच्छा, तो स्टेप्स तो हमको चाहिए नहीं क्योंकि स्टेप्स तो मैं वैसे काउंट रखता हूँ, तो ये हटा सकते हैं। आई डोंट नीड दिस थिंग इधर। आई कैन जस्ट रिटर्न कॉस्ट, स्टार्टिंग में 0 है, इट्स फाइन। द नेक्स्ट थिंग इज एंड नंबर इज इक्वल टू एंड, ओके, वरना फॉर मल्टीप्लिकेंट इन अरे जो भी नेक्स्ट नंबर है, राइट? नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या, नेक्स्ट नंबर क्या है, इज इक्वल टू नंबर इंटू मल्टीप्लिकेंट मॉड, राइट? सो मॉड ले लूँ अगर मैं, so right, if next number not in visited तो visited कर लो। visited करने के बाद क्या होगा, after we do a goddamn visited को क्यू में डालना, क्यू डॉट append अपना लिखेंगे, एंड जब ये एक पूरा लेवल हो जाए वी कैन इंक्रीज द कॉस्ट बाय 1, रेटी उस लेवल के सारे उठाए, लेवल से सारे नंबर उठाओ, अगर फाइनल है तो एंड रिटर्न कर दो, वरना नेक्स्ट नंबर बनाओ, नेक्स्ट नंबर विजिट नहीं कराए तो डाल दो, एंड अगर मैं कभी पहुंच ही नहीं पाता तो वी कैन रिटर्न जस्ट ट्राई। चलो, हाँ, BFS से हो गया, बेटर कॉम्प्लेक्सिटी 2.5 से, गुड वन। नेक्स्ट करते हैं, इसको 17 कर दो, पक। बेलमैन फोर्ड आ गया, बेलमैन फोर्ड की वीडियो देखनी पड़ेगी, अकाउंट पर मेंबरशिप। लीड कोड तो नहीं है तो मैं, अरे बेलमैन फोर्ड का थोड़ी है, शूट हो गया क्या, किसने बनाया है, जोसेफ क्रिस्टियानो।
मैं नहीं देख रहा हूँ। गेट वॉच वीडियोस नेटवर्क डिले टाइम भी मैं कर चुका हूँ बेलमेंट फोर्ड। मतलब कर सकते हैं, लेकिन वाई वुड आई डू बेलमेंट फोर्ड जब मैं डाइस पर लगा सकता हूँ। बेलमेंट फोर्ड की गंदी नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्स। वी इंटू ही है, which is worse than dice class. So algorithm GFG practice पे कुछ नहीं है क्या? है तो ओके। And EH is represented by 2D array W8. Take your task from this goes to order the whatever some reachable. First, if the graph contains a negative bit cell, the 10 minus 1 to indicate the shortest path cannot be reliably. क्यों अगर -1 की अगर साइकिल है जैसे लो तो what do they mean by minus negative cycle? I think ये negative cycle है क्योंकि -2 -6 -8 एंड 5 तब भी -3 हुआ। मतलब एक साइकिल में मेरा कॉस्ट -3 हो रहा है, तो मैं जितनी साइकिल करते जाऊंगा मेरा वेट कम होता जाएगा। राइट। सो आई कैन नॉट कंप्यूट तुम्हारा इनका कॉस्ट क्या है, क्योंकि इनका सबसे लोएस्ट कॉस्ट इज नेगेटिव इन्फिनिटी। राइट। ओके, तो आई थॉट कि बेलमन फोर्ड इनके लिए भी काम करेगा कि ताकि ये पहली बार मैं बेलमन फोर्ड देखूँ। ओके, तो वीडियो देखते ज़रा कैसे करते हैं बेलमन फोर्ड। है मेरे को फ्लॉयड वॉशल आता है, ये शायद मैंने कर रखा है। राइट, नहीं करा। ओके, लेट्स वॉच इट। अभी सुना। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So in this video, we're going to learn about the Bellman-Ford algorithm. Now this is again an algorithm which will help you to find the shortest path. Yes, yep. I might be thinking, but Striver, we already know an algorithm like Dijkstra, बिल्कुल which helps us to find the shortest path. बिल्कुल। How is this different? It is the exact similar algorithm which will help you to find the shortest path from a source to all the other nodes. Yes, to all the other nodes. But the only difference is, if you remember the video of the Dijkstra algorithm fails when the graph has नेगेटिव negative वेट। edges. Please remember, if the graph has negative edges, the Dijkstra algorithm will fail. And there was another point, if the graph has negative cycle, the Dijkstra algorithm goes for a TLE, like it will keep on running, it will keep on running, keep on minimizing the distance, बिल्कुल it keeps on running forever. So Dijkstra does not help you to detect negative cycle. So Bellman-Ford is an algorithm that helps you to detect, remember this, that helps you to detect negative cycles as well. That's the specialty about Bellman-Ford, and it is applicable only in DG. What is DG? Directed graphs. Now you might be thinking, what ओके। if it's an undirected graph? Then how do you apply Bellman-Ford algorithm to it? Very simple. Remember, this is how a directed edge looks like. So the edge weight will be 5. So there is an edge from 1 to 2, and the edge weight will cost you 5. But imagine if I give you an undirected graph and I say 1 to 2, and the edge weight is 5. So in तो order to 1 से implement 2 2 Bellman-Ford, से you 1 need to सही convert है। this into something like 1. There is a directed edge from 1 to 2, which will cost you 5.
and there is a directed edge from 2 to 1 which will cost you 5. So you just need to represent the undirected मतलब graph all in form undirected of a graphs directed are graph directed in graph order only. to implement the Bellman-Ford algorithm. The Bellman-Ford algorithm will only work if you are given a directed graph. Remember this. So if you're given an undirected graph, just change it to a directed graph by having two side edges with the same edge weights. That is how you can always implement Bellman-Ford for any of the questions. The only difference from Dijkstra is it helps you to detect negative cycles. What do you mean by negative cycles? Imagine I draw you a graph which goes from 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 1, and the edge weight is -2, -1, and something like 2. So if I ask you the path weight, what will be the path weight? The path weight will be very simple. It will be -2, -1, +2. So -2 +2 will go, and the path weight -1. is basically -1. So if you apply Dijkstra, it will keep on rotating, keep on encircling in the path because the path reduces at every stage. So thereby Dijkstra will fall under the TLE loop for such an example. But when you talk about Bellman-Ford, Bellman-Ford is an algorithm specifically designed such that it will tell you that, hey, listen, this particular graph has a negative cycle. This is what you call as a negative cycle if a path weight is lesser than 0. If a graph has any path weight which is lesser than 0, then I can say that the graph has a negative cycle. Now let's try to implement the Bellman-Ford algorithm. So I will be taking this particular DG, which is the directed graph, in order to implement the Bellman-Ford algorithm. And we know that it is a single source shortest path algorithm. So the starting point is 0, and these are the edges given to you. So the edges will be given like U and V, which means there's an edge from 3 to 2 with an edge weight of 6. There's an edge from 5 to 3 with an edge weight of 1, which is very obvious. If you see, this is this particular edge. And if you look at 3 to 2, this is nothing but this particular edge. So all the edges are given to you. Now something very, very important to note down. Edges can be given in any particular order. Yes, edges can be in any order. Like, it's not necessary that you have to follow any particular order. If you carefully see, you can have 3 to 6 at the top, you can have it here, you can have it here, you can have it at the bottom. The edges can be jumbled, it can follow any order. What matters is you have to have all the edges of the directed graph. The order can be anything. Very, very important. Edges can be in any order. Now, what does Bellman-Ford state? The Bellman-Ford will state you have to relax all the edges. Remember this. Relax all. Very, very important. Relax all the edges n minus 1 times sequentially. Very, very important point. Now, what do you... रिलैक्सेशन ऑफ एजेस के कुछ कल ही तो मैंने करा था, भूल गया क्या होता है। फक, किसमें था रिलैक्सेशन ऑफ एजेस? टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसमें, हाँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग रिलैक्सेशन ऑफ एजेस। यप, ये था। तो इसमें क्या करते थे, रिलैक्सेशन ऑफ एजेस के नाम पे हम ने टोपोलॉजिकल need to find the shortest path। ये तो ठीक है, आई थिंक साइकिल डिटेक्शन में था। यस में था, एक सेकंड देखो। Hey everyone, welcome back to the channel. Do you see a subtle change from the graphs that we were doing till now? Yes, you do. So if you see 0 and 1, there's an edge, but we have added edge weights to it. We are saying it will take you 2, will be 0. After this process, you have a very strong hold of what we are doing. Once you understand this, I will tell you the intuition tag. And this, instead of storing an integer, previously it was like 6 as the shortest path from the source. They've clearly stated that the source will always be 0 to all the DAG. Now, what is a DAG? If you remember, graph, that is the definition of it we were doing till now. Yes, you do. Edge from 0 to 1. So in short, it takes 2. Are there any other paths in the graph? The answer to that is no. So I can say, if I say node 1, कहाँ पे, where do we relaxation of edges? कौन सा सवाल था? ये होता था। इसी सवाल में बहन हमने कुछ महामहिम करी थी।
शॉर्टेस्ट पाथ इंटैक्ट टोपोलॉजी को सॉर्ट करा, उस ऑर्डरिंग में हमने फिर नेबर्स चेक कर लिए बस एक से। उसके बाद कांस एल्गोरिथम में इन डिग्री वाला था, इवेंचुअल सेव स्टेट्स, बल्कि स्ट्रीम देखनी पड़ेगी मेरे को शायद बाद में। विद यूनिट वेट से तो BFS है, डाइस क्रास, पाथ विद मिनिमम एफर्ट है, सारे तो डाइस क्रास वाला है। Deepest flight, minimum effort, shortest path in validity. These are all eventual safe states. पहले साइकिल ढूंढी, फिर सेफ वाला वो देखते कौन सा सेफ है नहीं है। ये भी नहीं है। हाँ, इंटरेस्टिंग। आई गॉट नो क्लू किसमें था, कल की स्ट्रीम देखूंगा तो याद आएगा। बेलमन फोर्ट। What do you mean by relax? Y n minus 1, everything you will understand if you watch the video till the end. So what they're saying is relax all the edges n minus 1 times. या फिर इफ आई जरा हिस्ट्री देखो, मैंने स्ट्राइवर की कौन सी वीडियो देखी है। हिस्ट्री किधर गई? स्ट्राइवर कांस एल्गोरिथम, नो वे, मेरा सबसे लेटेस्ट कांस एल्गोरिथम मंडे को। मंडे से बाद मैंने इसकी एक वीडियो नहीं देखी, कल ही तो मैंने देखी थी। नहीं, रिडक्स साइकिल एंड डायरेक्टेड ग्राफ में कुछ रिलैक्सेशन होता है। यूजिंग DFS हो तो सिंपल है, लूप लगा के साइकिल ढूंढनी है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आई थिंक कांस एल्गोरिथम में था रिलैक्सेशन ऑफ एजेस। Oh, I can say in degree of 0 will do up. So if I write 5, 4, then I can write 3. 5 appears before a value for 1. So there any such to directed. So if you keep directionally, so there's an edge between one have a graph of data structure. This is the particular adjacency list. BFS and coming edges. Can I say it is 2? So I will say the number it is again fast is just 1 as well. So I've inserted. Do we relax edges and cons? So डाइस क्लास की वीडियो में देखा Oh, I can. डाइस क्लास किधर है? मैं तो देखी नहीं उसकी वीडियो। Okay, I have no clue. Sequentially. Now, what is the definition of relax? Let me write that as well. So, the definition of relax states if you have a distance array and if the distance taken to reach u plus the edge weight that you require, for an example, you're standing at 5 and you want to go to 3, the edge weight is 1. So, this is the edge weight that I'm talking about. So, if the distance of u plus wt is lesser than, very, very important, is lesser than the distance of v, which means as of now, you had 5, you're trying to go to 3 with a 1. So, whatever distance you took to reach this u, which is 5, so basically distance of 5 plus this one, if that is smaller than this, whatever you took to reach 3, then you got a better guy similar to Dijkstra. So what you'll do is you will simply go ahead and say, okay, I got a better guy. So I'll be like distance V is equal to the new distance, which is distance U plus W. This is what I call as relaxation of edges. This will be done for n minus 1 times. What do you mean by n minus 1 times? If you go over here and look at the n over here is 6 because there are 0, 1, 2, 3, 4, 5, like 0 base indexing nodes. So thereby n is 6. So you have to relax it for 5 times. 5 iteration of relaxations has to be done. Now, how to do it? Let's understand that. But before that, since you are calculating shortest path, what do you require? You require a distance array with everything initialized to infinity. So let's do that. So initially, when you initialize the distance array,
the source will be marked as 0 and everything else will be marked as infinity because you बिल्कुल haven't reached anywhere. So as of now, you know you're starting from here and that is always going to be taking a distance of 0, but you haven't reached something like 1, 2, 3, 4, 5. So what you do is you just initialize them with infinity. Now, how many iterations or how many relaxations you need to do? N minus 1. What is n? 6. So remember, you have to do 5 relaxation is what you need to do. Now, on the first relaxation, let me explain you. If I say first relaxation, what you need to do is, now on the first iteration, what you'll do is, you'll go across the first edge, second edge, third edge, and so on to the last edge. You have to go across all the edges, and that is when you say first iteration is done. On the second iteration, you have to go across again, third iteration again, fourth iteration again, fifth iteration again. You have to keep on going, keep on going, keep on going for 5 times. Okay, so when I say first iteration, what does that mean? That's very, very simple. You have to perform this thing on every edge one by one. That is what you call as one complete iteration. Okay, so the first iteration, what will happen? The relaxation of this edge will happen, then this. So let's do the relaxation of the first edge. Very simple. I know I'm starting like distance of 3. I will take 6 in order to reach the distance of 2 because from 3 to वो 2 is where I need to infinity go and I'll take a 6. So what is 3? If I look at 3, the value of 3 is nothing but infinity. So if I haven't reached 3, is there a point in going ahead with 3? I haven't reached 3, so there's no point, right? So the relaxation of this edge is done. Next you go to this edge. है It's like from शायद 5 to 3. Cool, let's मतलब again जब do the तक 0 relaxation. नहीं होगा From तो पहले 5 उसमें you फायदा take ही नहीं 1 and you reach 3, right? So can I say 5 is still infinity? So you haven't reached 5. So if you haven't reached 5, there's no point. Next is this one, which is 0 to 1. So you're like, you can start from 0, you will take 5, and you will reach 1. So when you say distance of 0, it says, yes, I have reached myself. It's वो a 0 कोर्स तो distance समझ because गया I'm the लेकिन source. ये क्यों Plus, I'll काम take कर another रहा है 5, लाइक and I'll reach the 1, क्या which गारंटी was है कि previously reached n with माइनस infinity means 1 not reached. आइटरेशंस So में I've हो got 5. जाएगा So I can go and update this to 5. So on relaxation, I update one of the nodes to 5. Perfect. Next is this guy, which has to be relaxed, which is distance of 1 minus 3 lesser than distance of 5. Very, सही very है important. 2 Distance of 1 5 minus 3 lesser than distance of 5. So if you carefully see, we have a 1 here, right? Do you see? We have a 1 here. So how much has 1 taken as of now? 1 has taken a 5. So it's like 5 minus 3 lesser than distance of 5, which is infinity. So 2 lesser than infinity. So I can reach 5 in distance of 2. So go and update this with a distance of 2. And I can say the relaxation of this particular edge has been done. Next is this guy. So let's quickly relax this as well. This is nothing but you can write distance of 1 minus 2 lesser than distance of 2. Again, what is distance of 1? If you carefully see, it's nothing but 5. 5 minus 2 is 3, which is lesser than infinity. So you get 3. So go and update this to 3. Perfect. Done. Next, you will go across and do this particular iteration. So this is nothing but 3. So you can again write distance of 3 minus 2 again lesser than distance of 4. That's what you can easily write. And can I say, if you, why is this coming up again and again? Wait. So what I can say is, what is distance of 3? Can I say this? That distance of 3 is still not infinity, so this will not be done. Next is the last edge, which has to be relaxed. Let's quickly relax the last edge, which is nothing, is 3. So what I can say is, distance values. Okay, now you have to again do it, which is the second iteration. And the second iteration, what you'll do, you'll again start, yes, you'll again start from the first. Now what is distance of 3? Infinity, not reached. What is distance of 5? This time you'll find 5 has been reached with a distance of 2. Why did you find? Because in the first iteration, when you went, 5 was updated somewhere here. And now again, when you come back and restart, that 5 value which you updated here will be in use here. So what is the 5's value? 2 plus 1, which is 3, lesser than infinity. So this will go as 3. So go across and update 3 as 3. Perfect. Next one, this one. What's the value of 0? 0. So 0 plus 5 lesser than 1. It's still 5, not to be done. What is 1? 5. 5 minus 3 is still 2, which is lesser than, not lesser, so not to be done. Again, let's check out this. What is 1? 5 minus 2, which is 3, which is still not lesser. What is distance of 3 this time? This time distance of 3 has been computed. What is distance of 3 this time? 3 minus 2, which is 1, says 4. Is it lesser than 4? Yes, because 4 is 6. So if you see 4 is 6, what I'll do is I'll say distance of 3 was 3 minus 2 is 1, which is better than the current distance. So I'll go and update this to 1. Very simple, because I started with 3 and I'll take a minus 2 distance in order to reach this guy. Again, the last guy is this, which is nothing but 3 plus 3 again 6, which is not better than this. So I can say the second iteration is also done. Similarly, you will do the third, fourth, and fifth. Basically, again ramp, again ramp, again ramp. And once you have done this, this particular distance array will be storing all your shortest distance. Yes, it will be storing all your shortest distance. And if you carefully look at this, it does not have a negative cycle. It does have negative edges, which is allowed, but it does not have a negative cycle. So ultimately, after all the 5 iterations or n minus 1 iterations, your distance array will be giving you the shortest path from the source 0 to all other nodes. Remember this, which will be stored in this distance array. Now, a couple of questions. Why n minus 1 iterations? That's the first question. And the second question will be definitely how to detect negative cycles. What if the graph has negative cycles? How will I know about that? So, because the entire algorithm is pretty much similar to Dijkstra, because this portion is similar to Dijkstra. The only thing that we are doing is we are just doing
n minus 1 iteration. So obviously, I want to know n minus 1 iteration because the thought process is kind of clear. But why n minus 1 is my question. The thought process must be clear. Why? Because we just move ahead and this guy was updated. This updated 1. Then with the help of the 1, I got updated 5. Then again, when I came back, with the help of 5, I updated 3. Then again, when I went with the help of 3, I updated 4. And it went on moving. So eventually, everyone was getting updated on all the iterations. So ultimately, but how did I know that on n minus 1 iterations, I will get my answer? That's my question. Because what if I would have done 2 iterations? What if I would have done 3 iterations? The question still lies, why exactly n minus 1 iteration यही मैं has जानना been चाह done? So let's understand that as of now. So in order to understand the intuition, or why n minus 1, because that is the critical question here, because we have understood the thought process. We knew 1 helped me to compute, because we knew 0 was the source which helped me to compute 1 helped me to compute 5 and 2, and similarly 2 helped me to compute 4, right? And when I came back, since I had computed 5, this 5 helped me to compute 3, and eventually this 3 helped me to compute 4, and so on. It will just go on this loop. मैं Thought process गेस is clear. करता हूँ कि मान लो n टोटल नोड्स है, राइट? तो कोई भी नोड अपने सोर्स नोड से कितना ज़्यादा दूर हो सकता है इन नोड्स, टर्म्स ऑफ नोड्स, मतलब उसके बीच में कितने नोड्स हो सकते हैं? n माइनस वन नोड्स, राइट? माइनस वन नोड्स हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि टोटल नोड्स ही है ना। तो अगर सेंटर पे n माइनस वन है, हर एक आइट्रेशन में वी आर गोइंग टू रीच अ न्यू नोड, राइट? एक नए नोड पे पहुंचेंगे नहीं, फिर उसे एक नए नोड से आगे फर्दर नोड्स पे पहुंचेंगे, राइट? राइट। विद n माइनस वन आइट्रेशन वी कैन गारंटी कि हम सबसे दूर वाले नोड पे भी पहुंच जाए। वाई? वाई? क्योंकि किसी भी एक नोड है, उसके जो भी जस्ट ये एक लेवल दूर है, उनका डिस्टेंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं? मतलब नॉट मिनिमम, नॉट नेसेसरली मिनिमम डिस्टेंस, बट अ डिस्टेंस, राइट? वो हम एक आइट्रेशन में कर सकते हैं, राइट? वॉट आउट जो दो डिस्टेंस दूर है, उसके लिए दो आइट्रेशंस लगेगी टू फाइंड अ डिस्टेंस, राइट? हो सकता था इसके लिए 5 है, और ये दो, एक, दिस कुड बी द शॉर्टर पाथ, लेकिन अभी मैं शॉर्टर पाथ नहीं ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं अ डिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ, अ वे टू रीच दैट नोड। गॉट इट? तो जो कोई भी नोड अगर ऐसे, अगर कोई भी नोड 3 नोड्स दूर है, तो हमको थर्ड आइटरेशन में उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसे करते करते कोई भी नोड कितना दूर हो सकता है सोर्स नोड से? n माइनस वन नोड से दूर हो सकता है, राइट? 1 2 3 4 और टोटल नोड्स 5 है। सो आई कैन गारंटी दैट n माइनस वन आइट्रेशंस में we have a way we have a way to find a distance for each and every node। ये गारंटी ले सकते हैं। अब शॉर्टेस्ट की क्या गारंटी है कि वो शॉर्टेस्ट ही होगा? द मेन थिंग कि हाँ, अगर मान लो नेगेटिव साइकिल्स नहीं है, राइट? क्योंकि अगर नेगेटिव साइकिल है तो इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी है, वो तुम्हारा चलता जाएगा। देर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि ऐसा नेगेटिव साइकिल है, राइट? सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, निकालोगे क्या? लेकिन मान लो अगर नेगेटिव साइकिल नहीं है, if there is no negative cycles, so क्या n minus वन iterations में the main thing is हम n minus वन iterations में सबसे दूर वाले नोड पे पहुंच सकते हैं, ये गारंटी है। अब मान लो कि दिस वाज नॉट द बेस्ट वे टू रीच इट, बेस्ट वे कुछ था ये, राइट? ये मान लो, या ये भी नहीं, ये मान लो, ये समझेंगे क्या कहने से कि n minus टू iterations में आई कैन रीच दिस नोड बेस्ट वे,
n-3 iterations में I can reach this node best way. n-4 iterations में I can reach this node best way. And n-5 iterations में can I reach this node best way. 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नोड्स है. n-5 मतलब 6 - 5 फर्स्ट आइटरेशन में. एंड यस फर्स्ट आइटरेशन में आई हैव द बेस्ट वे, तो 0 ही है. दैट मीन्स एक आइटरेशन में आई हैव द आई डोंट नो. एक पाथ पे तो पहुंच सकते हैं. हाउ इज दैट गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ? चलो मान लो. अच्छा ठीक है, मैंने समझ गया. मान लो अब सबसे दूर वाली नोड की बात भूल जाओ. ये वाला नोड है, ये वाला नोड है. ये नोड जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, सोर्स नोड, डेस्टिनेशन नोड, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, मैक्सिमम कितने नोड्स बीच में आ सकते हैं? n-1. राइट, n-1 नोड्स. और नोड्स आ सकते हैं बीच में नहीं. मतलब किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन में बीच में कितने नोड्स आ सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में? n-1 नोड्स. तो क्या मतलब इसका मतलब है n-1 आइटरेशंस में we will achieve all the possible paths, right? अब मान लो कि एक ही वो था, इस नोड को पहुंचने का एक ये तरीका था, तो ये मेरा सिर्फ साइकिल नंबर आइटरेशन नंबर 3 में पकड़ मिल जाएगा मेरे को. फिर जब एक और आइटरेशन होगी, आइटरेशन नंबर 4, 1 2 1 2 आइटरेशन नंबर 2 में मिल जाएगा ऊपर से. ठीक है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट नहीं था. जब मैं आइटरेशन नंबर 3 करूँगा तो मेरे को शॉर्टेस्ट भी मिल जाएगा. राइट. ऐसे अगर डायरेक्ट होता तो आइटरेशन नंबर 1 में मेरे को ये मिल जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आई कैन गारंटी. ठीक है. But why n-1 is still the question. Let's understand this with this particular directed graph. So in this directed graph, if you remember, while explaining, I did tell you edges can be in any order. Edges can be in any particular order is what I always stated, right? So imagine I give you the edges in this particular order. So how many nodes are there? The number of nodes are 5. So how many iterations will we have? We will have 1, 2, 3, and 4 iterations because edges are 5. So I have to do n-1, which is 4 iterations. Correct? So now what I'll do is I will start off with the distance array. So let's quickly have the distance array. So again, to ease out understanding, I have kept 0 as the source and made it a distance of 0. Okay. Now let's do the iterations. So the first iteration states, this is the first edge. So it states, okay, distance of 3 plus 1, are you lesser than distance of 4? And it's like, distance of 3 is still infinity. No. Goes to the next one and says, distance of 2 plus 1, are you lesser than 3? And I see distance of 2 is still infinity. No. Next one will be distance of 1 plus 1 is lesser than distance of 2. I'm like, 1 is still infinity. No. Next, I'll be like, distance of 0 plus 1 is lesser than distance of 1. I'll be like, wait, 0 is 0 plus 1 is lesser than infinity. So 1 goes as 1. So go and update 1 as 1. Perfect. So in one iteration, at the end of the day, this one was updated. So first iteration, done. Okay. Now let's talk about the next iteration. Next iteration, what is 3? Infinity. Next iteration, what is 2? Not to be done. So second iteration done. So did you see what happened? In the first iteration, the 0 got the value of 1. In the next iteration, since you had the value of 1, that one helped you to get 2. So the third iteration, what will happen? Come on, what will happen? Think. Yes, you're correct. Yes, you're correct. In the third iteration, we don't have 3. But the second iteration gave me 2. When I go to relax the next edge, this 2, who has a value of 2 plus 1, will go ahead and update. What happened in the third? 2 updated. Ultimately on 4 iterations, the distance array is ready. And this is your shortest path. Yes. This is your shortest path. Can I see this? I can. So thereby, did you understand why n-1? Because in the worst case, you can have the guy at the bottom who will give you this. Then this will give you this. And then this will give you this. And then this will give you this. That is why n-1. That is why n-1. Yes. I hope that's clear. I find a lot of content over YouTube, but no one will say you why n-1. They'll be like, n-1, let's do it. We got the answer, code it, and that's it. This is very important. The thought process, the intuition, and the clarity about an algorithm is very, very, very important. Now, the question is, how to detect negative cycle? Again, thought process. Since I knew negative cycle means if I keep on, because this will give you -1. Again, if I rotate, it will give you another -1. If I rotate another -1, on every rotation, you are decreasing the path value by -1. So what will happen?
if there is a negative cycle. So what will happen is, if there was five iterations, if you do the sixth iteration, the और अगर values will still reduce. The values will still reduce on दिस वाज अनदर वे nth जो मैंने सोचा था, iteration. बट आई वाज The नॉट श्योर. आई थॉट ये बहुत ही relaxation ब्रूट will be फोर्स done. एक तरीका है कि लाइक ऐसा एमएल में किसी एक एल्गो में था कि तब तक करते रहो जब तक करंट आइट्रेशन और नेक्स्ट आइट्रेशन सेम ना हो जाए. अगर सेम हो गई मतलब कि वापस बार बार करते जाओगे तो फ़ायदा नहीं है, राइट. तो वही सोच के मैंने सोचा कि अगर मैं सिक्स आइट्रेशन करूँ सेम हो तो शॉर्टेस्ट ही है, लेकिन अगर और कम होगी तो गड़बड़ है. And if the distance array gets updated, because we have proved that at max we will be requiring n minus 1 iterations, we have proved. But even after that, if I require on the nth iteration, if I do a relaxation, and even if I see distance gets reduced, नेगेटिव sorry, साइकिल. distance gets reduced, I will be right. Negative cycle exists because I know at n minus 1 iterations, I should have gotten my answer. But if at the nth iteration, if there is still a reduction, it means we are running on the loop. We're running on the loop. That's why the distances are reducing, So both the questions answered. So it's now time to code it up. So I hope you've understood the entire algorithm. Now it's time to code it up. So as usual, I'll be coding the C++. ओके, सो हम भी कोड अप करते हैं. कोड अप. ओके, ठीक है. So we can say this to float of u into v, distance of source is equal to 0. Then edges. Okay, edges are for u comma v comma w and v. क्या करना है इसमें? What we're gonna do is simply relax the edges. अच्छा, उससे पहले मेरे को देखना है पाइथन क्या फ्लो इंफिनिटी में ऐड करके क्या होगा. प्रिंट फ्लोट ऑफ v प्लस 1 इंफिनिटी, ठीक है. If distance of u plus weight is less than distance of v, तो अपडेट कर दो. Distance of v is equal to distance of u plus w. I mean, I can just do a line. Distance of v is equal to minimum of distance of v, comma distance of u plus w, right. बस यही करना है मेरे को. अच्छा, और ये कितनी बार करना है? For whatever in range v minus 1, right. Okay. So हमने we relaxed our edges office. After relaxing your edges, now do another iteration. Shortest is equal to distance copy 1. Then I can say then do another this iteration u comma v. In edges, distance of v is equal to minimum of distance of v, comma distance of u plus w, right. Now I can say for I can say if shortest is equal to distance, return जो भी था, return shortest, else return list of minus 1,
बस इतना झाड़ बराबर है फिल्म में। ओके आई फक्ड अप। अच्छा इन्फिनिटी नहीं देना, 10⁻8 चाहिए सालों। Okay. List of distance if distance is not equal to infinity, I think ये भी चलेगा, else 10⁻, 10 else 10⁸ for distance in infinity, float ही लिखना पड़ता है क्या? I thought कि चलता है, ये नहीं चलता होगा। Let's try. Okay. झाड़ तो था एक बिल में तो इससे चूतिया मैंने नहीं देखा होगा। डाइस क्लास से ज़्यादा मुश्किल है। नाउ अगेन एक और नया सवाल आया विच आई गॉट नो क्लू कैसे काम करता है ये। अब एक एटलीस्ट पता था पिगमेंट कोड नेगेटिव वेट्स के लिए यूज होता है, इसका क्या काम है आई गॉट नो। साइक्लिक नहीं है, मतलब ये सेम है, मल्टी सोर्स है इसका। मतलब एक तरीका है कि हर एक नोड पे जाओ, हर एक नोड को एज अ सोर्स मानो एंड डू अ बेलमेंट कोड, बट दैट इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर ई, राइट? दैट इज अ वी स्क्वायर ई एल्गोरिथम। एन इंटू एन का साइज है, मतलब एन नोड्स है, मतलब 100 नोड से तो एजिस कितने हो सकते हैं? एजिस तो एन इंटू एन आई थिंक, हाँ आई थिंक एन इंटू एन एजिस है, तो एन डिस्टर 4, 100 स्क्वायर 468 10 डिस्टर 8, शायद ये भी चल जाए, बट फ्लड मार्शल देखते हैं। लेट्स सी व्हाट द हेल इज फ्लड मार्शल। फ्लड फोर तो झाट बराबर टेढ़े। Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So today we will Yep, we are be doing learning extremely one well. more shortest path algorithm, which is the Floyd-Warshall shortest path algorithm. Now this is very, very different from the Dijkstra or the Bellman-Ford that you learned, Okay, because Dijkstra and Bellman-Ford were a single single source, source shortest path algorithm, correct. where you were given a source and you have to find out till all the other nodes the shortest path. There was only a single source. But when you talk True, about Floyd-Warshall, it is different. Over here, there are multi-source. 5 nodes. So from every node, be it from 0, 1, 2, 3, 4, from every node, you have to tell me the shortest path to every other node over here. If I'm asking you from 4 to 1, you should be knowing. If I'm asking you from 1 to 3, you should be knowing. So there are multiple source. So this is why this is known as a multi-source shortest path algorithm. Remember Okay, this. It helps you detect negative cycles as well. Helps you detect negative cycles as well. So I hope pretty much you've understood what you need to find. Now, what is the shortest path? Very simple. If I'm asking you from 0 to 1, and I ask you what is the shortest path in order to reach from 0 to 1. So you can take multiple paths. One of the paths will take you 6. You can take this path, which is going to take you 5. You can take probably this path, which is again going to take you 5. Or you can take the shortest one, which is go here, go here, go here, which is going to take 2, 1, 1, which is an addition of, I think, 4. Yeah. That's the shortest path. So the shortest path from 0 to 1 is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 1.
this is the shortest path. If I'm asking you, that's the definition of shortest path. Okay. Any path that takes the least amount of edge weights is known as the shortest path. So what is the thought process behind the Floyd-Warshall algorithm? Now, it's very simple. It states go via every edge, go via every node rather, or go via every vertex or node, whatever you wish to write. So it's very simple. It states go via every vertex and node. Go and try and get the shortest one. So for an example, let's take, we want to find from 0 to 1, right? So if you're trying to find from 0 to 1, assume the distance you're trying to find is from 0 to 1, okay? So what are the possible ways that you can go? You can be like, Striver, I can go from 0 to 1 directly. I'll be like, yeah, that does make sense, right? Because that's a straightaway path. 0 to 1, if there's an edge, I go via. So 0 to 1, 1 to 0 सेम नहीं क्योंकि this is a directed वो right और बेलमैन फोर्ड अगर मैं बोलूँ बेलमैन फोर्ड को चलाओ undirected way, so we can just make it as a pretty simple क्या डायरेक्टेड ग्राफ डायसेस को भी इनडायरेक्ट में चलाने के लिए वो डायरेक्टेड हर एक एज को 2 एज में बना दो एंड उस हिसाब से ये भी चलना चाहिए अनडायरेक्टेड. That's one of the ways. But if I ask you, go via every vertex, then you can be like, okay, I can probably go via 2. So which will mean I will go to 2 and then from 2 I'll go to 1. Does that make sense? Yes. And if I go from 0 to 2, it's going to cost me 2. And from 2 to 1, it's going to cost me 3, which will give me a total cost of 5, which is nothing but this particular path. That is if I go via 2. That is if I go via 2. Can I go via 3? I can. So that will be something like, I'll go from 0 to 3, and then I'll go from 3 to 1. Correct? So if I go from 0 to 3, that's going to cost me 4. From 3 to 1, that's going to cost me 1, which will be a total cost of 5. Again, can I go via 4? I can go via 4. So if I go via 4, let me write that in white. If I go via 4, it'll be 0 to 4 and 4 to 1, right? But 0 to 4, if you see, it's not direct path. It's a path via 2. Probably someone would have computed. Assume as of now, someone has computed that and given you from 0 to 4, it's a 3. Okay? So I'll be like, okay, 3, and from 4 to 1, it's a 1. So a total of 4. So apparently, we notice that from 0 to 4 and 4 to 1, it's taking me a cost of 4, which is indeed the shortest one. So what I did was, in order to go from 0 to 1, I tried out every different vertex. Can be 2, can be 3, can be 4. And apparently, I took the minimal path, and this is what it is. So the logic is very simple. Assume all the vertex are from, like the vertexes are definitely from 0 to n minus 1. So I can say all the vertex. So if I'm trying to look, can I say if somewhere down the line, if this is I and this is j, and can I say this is nothing but I go from straight I to j, which is nothing but the edge itself. And can I say this to be k, assume. So can I write the path to be minimum of, if you try out all the k's, it will be from I to k, very obvious, because you go from 0 to 2, and then from 2 to this, which is nothing but the j, correct? So can I write this plus j of k? I can. That's what the path is. From I to k I'll go, and from j to k is what I have to go. And if I take minimum of all of them, 5, 5, 4, minimum of all of the go through vertex, then the answer, I'll have the answer. So somewhere down the line I've understood. But I need to implement this on a wider scale. What do I mean by a wider scale? Because over here, 0 to 4 was not a direct edge. Because 0 to 4 meant it went via 2. So it was going via 2. So somewhere down the line, in the past, someone would have also computed 0 to 4. And they would have implemented via 2. Via to understand. So 0 to 4 would have been computed and stored. So this is where you get an idea, okay, something like a dynamic programming, because we're using something which has already been computed. So you get an idea that, okay, this is a dynamic programming solution. It's not necessary that you know dynamic programming. I'm just saying, try to relate. We are using something which is pre-computed. If I write it properly, I can write something which is pre-computed, which was, in this case, it is this more one. deeply Because than 0 to 4 was pre-computed. graph. It did not compute at the point. Someone already knew what was the value to go from 0 to 4. That is what you need as a pre-computation. So you pretty much got the formula. Now what I'll do is, I'll try to give you a sense of the graph, and then slowly, step by step, implement this algorithm so that you understand how is this algorithm implemented. Till now, in all the problems, we have been using the adjacency list in order to store the graph. But in the lecture 2, I've also taught you one more method, which is the adjacency matrix method. So you're going to use the adjacency matrix method in order to store this particular graph. Okay, it's very simple. In case you haven't seen the lecture 2, it's very, very simple. So something we know for sure is, if 0 is the node, and I want to go to 0 itself, the cost will be 0. If I want to go from 1 to 1, the cost will be still 0. So from any given node to the node itself, the cost is going to be 0 no matter what you do, because you're already standing in the node. Something I know, 0, 0. So this portion will be storing the cost. So I can call this as a cost matrix. So 0 to 0 will be 0, 1 to 1 will be 0, 2 to 2 will be 0, 3 to 3 will be 0. So basically I'm saying this is 0, 0, 0. This is 1, 1, 0. This is 2, 2, 0. This is 3, 3, which is again 0. Pretty much understood? Right. Now what are the other? It says 0 to 1 is 2. So go to 0 to 1 and store 2. Go to 0, go to 1 and store 2. It says 1 to 0 is 1. So you go to 1, you go to 0 and you store 1. Okay. It says 3 to 0 is 3. So go to 3, go to 0 and store 3.
Do not store the opposite vertex because it's a directed graph. It is a directed graph. If it's an undirected graph, for an example, if it's an undirected graph and you want to apply this fluid motion, just split this into something like this. 5, 5. As you see, remember, आगे बढ़ you भाई. just store 3, 0 as 3 because there is no 0, 3. Okay, nice. Next is 3, 1 as 5. So go to 3 and 1 and assign 5. Next is 1, 2 as 3. Go to 1 and 2 and assign as 3. Perfect. 1, 2, 1, 2 assigned as 3. Do we have any other thing? 1, 2, 3, No, 4, 5. बाकी 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have 3 to 2 as 4. 3 to 2 as 4. Done. So what I've done is I've assigned the cost. Make sure everyone else is infinity, which means unreachable as of now, which means unreachable as of now. So this is the initial cost matrix, which you can always derive from the given graph. Now you must be thinking, Yeah. but Shriver, this is a DG, a directed graph. What if it's a UG? How will we implement the fluid motion? Very simple. If there is an edge like this, अबे it गोला has a तो cost of 5. कितनी बार बोलेगा? You dual directions. Okay. So if you have to apply fluid motion in an undirected graph, just split that edge into 2 edges of same weights. That's how you can easily convert a UG to a directed graph. So this is the initial cost. Now what did I say? Let's, as of now, assume that I'm going to move via vertex 0. That's my first thing. I'll move via vertex 0. So if I move via vertex 0, I will have some upgraded distance, something for sure. So let's start off with vertex 0 and see what will be the resultant matrix that we will get. Now when I'm saying you have to move via the root 0, so can I say at first this is 0 to 0 stored as 0. Next is 0 to 1. So which means you're moving via root 0, which is 0 to 0 plus 0 to 1. Can I say it's similar to saying 0 to 1 because 0 to 0 will always be 0 and 0 to 1 is what we have already stored 2. So I can just copy paste 2. Next is 0 to 2. Can I say it's similar? 0 to 2 is nothing but saying 0 to via 0, by the way. Via 0 means 0 to 0, which is again 0 plus 0 to 2, which is nothing but infinity. So similarly, this will also be infinity. Why? 0 to 3 will mean 0 to 0 and 0 to 3. Similarly, this will mean 1 to 0. What does 1 to 0 mean? 1 to 0 means via 0 means 1 to 0 itself and then 0 to 0. Via 0 means that only, right? Via 0 means that because this is I, this is J, you're moving via 0. So can I say this one, this one, this one will just copy paste these values? You just go across, copy paste these values. Why? Because very simple. 0. If your destination is 0, you can't move via 0. So whatever you're taking in order to reach 0, that is what you copy paste. But what about these places? Let's fill them up. So I'm saying this place is 1 to 2. So I'm saying 1 to 2 via 0, which means 1 to 0 plus 0 to 2. Let's see the value of 1 to 0. 1 to 0 is 1. So I'll just write 1 plus 0 to 2 plus 0 to 2 is infinity. So that means it's an infinity which I do not need to write. So what I'll do is I will keep it as of now and whatever is the value, because I know in order to reach 1 to 2, I'm taking 3. And if I go via 0, I'm taking infinity. So 3 is a better option. So let's keep 3. No offense, let's keep 3. Next one I see is 1 to 3. You see, next one is 1 to 3. Okay, so for 1 to 3, it will be, I'll go from 1 to 0 plus 0 to 3. Now, what is 1 to 0? That's 1. Let's see if, what is 0 to 3? So 0 to 3 is again infinity. So if you go via 0, you'll again get infinity. And for 1 to 3, are we reachable in 1 to 3? No, infinity. So let's copy paste infinity. So similarly, I can say this is done. Similarly, what I'll do is I'll figure out the next guys, which is this, which is nothing but 2 to 1. Now 2 to path will not be considered. Next, I'll do 2 to 2. So if I go again 2 to 0, not उसके बाद क्या करते हैं right? To see what happens. Move to the next one. So next one I'll say via 1. 0 path has been built here. Via 0 path has been built here. Now I'll figure out the via 1 path now. Once I figure out the via 1, I'll figure out via 2, via 3, and so on. We'll get all the answers. So again, we know if even if I go via 1, something I know for sure is these guys will be 0, node to node. And anyone who goes 1, like if the source is 1, like for this guy, this entire portion will be nothing but this. Why? Because if you're trying to reach 1, 0, it actually means 1 to, via 1 means 1 to 1 plus 1 to 0. So you're actually going to himself only. If you're saying starting from and infinity. Similarly, can I say, going, let's do it. So first, this 2. What is 2, 1? Let's see. 2, 1, infinity again. 3, 1 plus 1. Previous, like whatever previous ways I've taken to 3, 1 again this time. I'm going with everyone. And whenever I'm going via 0, I'm basically taking this, then I'm taking this, then I'm taking this, then I'm taking this, then I'm taking this. So it's basically for this, taking this, for this, taking this, for this, I'm taking this, for this, I'm taking this. So every iteration, can I say what I'm doing is very straightforward and very simple. And that's nothing but I'm going from I equal to 0. This is what I'm doing at every node. Can I say this? Yes or no? I can. And what am I doing? I'm trying to go, for example, cost of ij. I'll take the cost as minimum of either what I have taken to reach it. That is currently what I'm taking. Currently, if I'm taking 5, I'll consider that 5 and I'll consider the new one via 1. So the new one via will be nothing but cost of I via whatever you're going via plus cost of that iteration. I'm trying out everyone, trying out this, everyone. And automatically these will be zeros because you have 0. Then ultimately the graph has an
where we say minus 3 minus 2 plus 2 goes, so total costing is minus 3. So what will happen is the Floyd-Warshall will work properly, and it will figure out a path via 1, 2 to reach 0. So the costing of 0 and 0 will be minus 3. And apparently the costing of any given node to itself should be 0, because the node to node should always be 0. And if it is anything lesser to 0, if the costing of any node, can I say this? If the costing of any node is lesser than 0, I can always say negative cycle. Nodes and node to node is lesser than 0. Means Floyd-Warshall has gone via this and has reduced the cost from 0 to something lesser because of a negative cycle. And you know, if it has a negative cycle, it doesn't make sense to find the shortest path, because someone will do unlimited turns and you'll just reduce its cost every now and then. So thereby, it's not possible for a negative cycle. So I hope you've understood the entire explanation. It's time to code it up. So as usual, the C++ solution. Okay, समझ आ गया मुझे. So let's code it up. Fine one. Okay. So initially we have our distance as we have this distance, right? Okay. Okay. So what you can say कितने nodes है? Len of distance. Yep. Smart answer. So जैसे initial matrix हमें तो दे रखी है exactly. So now I can start for middle in range nodes. ये middle वाला लो. For I in range nodes. For j in range nodes. Well, अब distance of I of j is equal to minimum of distance of I of j and या फिर जो नया डिस्टेंस आया, नया डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ आई से लेके मिडल प्लस डिस्टेंस ऑफ मिडल से लेके जे. राइट. आई से लेके मिडल प्लस मिडल से लेके जे तक. यही करते रहो. नेगेटिव साइकिल्स नहीं है ना. बस आई थिंक एंड देन रिटर्न डिस्टेंस. बस यही करना. इंडेंटेशन के साथ भी. करेक्ट आउटपुट देखो 9999. अच्छा, मतलब इस नोड से हम किसी और नोड जा ही नहीं सकते. तो मेरा बहन से 9999 जो आ रहा है. इसमें को इसकी टीसी देखनी है.
बराबर। तो फ्लड वॉशर कितना ले रहा है? कितना ले रहा है? वी क्यूब। डाइस्क्राज ऑन एवरी नोड कितना लेगा? वी इंटू ई लॉग वी। वी इंटू ई लॉग वी विच इज बेटर देन वी क्यूब। ओके। नाउ बेलमैन फोर्ड कितना लेता है? वी इंटू ई। वी इंटू बट एक और अब दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो? डाइस्क्रास विल नॉट वर्क अगर एक भी नेगेटिव साइकिल में, मतलब नेगेटिव साइकिल हुई तो कुछ कोई भी सही आंसर तो एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर एक भी नेगेटिव वेट हुआ डाइस्क्रास उसमें भी फेल हो जाता है फॉर इवन अ सिंगल नेगेटिव वेट। लेकिन ये, और अगर मैं बेलमैन फोर्ड करने बैठ गया फॉर ईच एंड एवरी सोर्स, तो मेरे को लगेगा एन इंटू एन, एन इंटू ई, राइट? वी स्क्वायर ई मान लो, एंड वी स्क्वायर ई कैन बी वर्स देन वी। ओके, डी क्यू है तो आसानी है, गलत क्यों हो रहा है? 9999, तो 0 1 2 3, तो थर्ड नोड, राइट? थर्ड नोड कहीं नहीं जा सकता। ओके, सो व्हाट द फक डिड आई फक अप? ग्राफ बनाते जरा धन वाला में। सो आई हैव 4 नोड्स, 0 1 2 1 3। 0 से 1 जा सकते हैं 8 में, 2 जा सकते हैं 7 में, हम यहाँ जा सकते हैं -3 में। यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं 1 में। 1 से 2 जा सकते हैं -1 में, एंड 1 से 3 जा सकते हैं 6 में। अब 2 से 0 जा सकते हैं 9 में, 2 से 1 जा सकते हैं 5 में, और 2 से 3 भी कहा जा सकता है 5 में, एंड यहाँ से नहीं जा सकते बाकी 0। अब नाउ डू टेल मी आंसर गलत क्यों आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 से 9999, 3 से 0 1 2, 3 से 2, 3 से तो मैं कहीं नहीं जा पा रहा। अच्छा, पता है क्या हो रहा है? -1, राइट? तो 3 से इसको लग रहा है मैं यहाँ पे जा सकता हूँ 10⁸ तो मैं मान लो मैं चला गया, अगर मेरे को 3 से 0 पहुँचना,
3 से 0, और 3 से 2 मेरे को जाना है वाया 0, तो 3 से 0 10⁸ एंड ये 7 तो नहीं है। 3 से 2 जाना है वाया वाया 1। हाँ तो ये भी लग रहा है ना इसे, तो यहाँ से 10⁸ में गया और यहाँ से -1 पहुँच गया 3 से 2 का फर्स्ट में। तो ये दिक्कत आ रही है क्योंकि चूती इन्फिनिटी यूज़ नहीं करते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू इज फॉर आई इन रेंज, इनके में दिमाग थोड़ा कम है। फॉर आई इन रेंज एन नोट्स फॉर जे इन रेंज, आई थिंक ये करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाना है, इफ़ डिस्टेंस ऑफ आई से लेके मिडल, अगर तुम जा ही नहीं सकते हो 0 to 10⁸, अगर तुम जा ही नहीं सकते, जस्ट कंटिन्यू। कैन आई यूज दिस ट्रिकी टेस्ट केस? लेट्स सी अब क्या आएगा। ओके अब सही आ रहा है। लेट्स डू दिस। ओके अभी भी गलत आ रहा है। या फिर मान लो अब क्या हो रहा होगा, ये -1 है और ये यहाँ से जा ही नहीं सकते, और डिस्टेंस ऑफ मिडल से लेके जे इज इक्वल टू 10⁸। 4, लेट्स सी। तो ये तो कर लिया था हमने। या दिस शिट वर्क्स, इन्फिनिटी नहीं दे सकते थे सीधा सीधा। तो एक और सवाल हमने कर लिया, फ्रॉइड आर। अब जैसे जैसे अगले आर्गो पे गए वो एक स्टार्टेड बिकम वर्स एंड वर्स। डाइस क्रास एकदम बढ़। बेलमैन 4 नेगेटिव वेट्स के लिए काम करेगा, लेकिन आई मीन बी इनटू ई। फ्लोइड मार्शल इवन वर्स देन अगर मैं सब पे डाइस क्रास लगाऊं, बट अगर नेगेटिव वेट्स है तो यूज करो, एंड साइकिल भी ठीक हो सकती है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स हैड थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। बाई डायरेक्शनल है ठीक। मतलब कि हर एक सिटी का कितने डिस्टेंस में कितनी नेबरिंग सिटीज है ये जानना है। दिस इज व्हाट आई नीड टू नो। दिस इज व्हाट आई नीड टू नो राइट। Return the city is the smallest number of cities that are reachable through some sequence.
Prove some path and whose distance at most distance threshold. Okay. आंसर 100 है। सो हर एक सिटी का, इसको आई थिंक फ्लॉयड मार्शल लग सकता है क्या? आई मीन डू यू नो इसमें नेगेटिव साइकिल्स, नेगेटिव वेट्स नहीं है? वेट ऑफ आई 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। सो हर एक सिटी को एज अ सोर्स लेके आई कैन फाइंड कि बाकी सारी सिटी से डिस्टेंस कितना है, अरे बाकी सारी सिटी से क्या डिस्टेंस है। आफ्टर फाइंड दिस आई फाइंड कितने सिटीज है जिनका थ्रेशोल्ड कम है। एक बार जब मैंने कर लिया, हाँ ये तो सिंपल है, हर एक सिटी पे डाइस प्राइस लगाओ। फ्लॉयड मार्शल से भी कर सकते हैं बट वो ज़्यादा टाइम को है कि वाई वुड आई डू दैट। एन स्क्वायर राइट, तो वी एन स्क्वायर लॉग वी बेटर क्या है? और और डाइस का और I wanna ask if there are no negative ways, which is better time complexity, Floyd Marshall or Dice for all sources. Dice use the line V into E log V, right? For dense graph, है ना? अब it now depends on कितने एजेस है। इसका मतलब है कि हर एक नोड से दूसरे नोड पे यू हैव अ fucking edge. तो इस केस में फ्लॉयड मार्शल विल बी बेटर, राइट? इस केस में फ्लॉयड मार्शल विल बी बेटर, वरना you can do dice curve also. तो अगर मैं एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाऊँ तो उसको मान पहले मेरे को n तो है मेरे पे, फ्लोट ऑफ infinity into n or whatever in range n, राइट? ये अपनी डिस्टेंस मैट्रिक्स है
for I in range n, distance of I comma I is equal to, and then for u comma v comma w in this distance of u comma v is equal to, right? I can say for whatever in range, the middle chain for middle in range, yeah, in range, yeah, in range b, range n, for I in range m, for j in v n, distance of I से middle, I से j is equal to minimum of distance of I से j comma distance of I से middle plus distance of middle से right. Now we have the distance matrix, हमको आंसर चाहिए, right? For I in range for I in range क्या करना है हमें? For I in range n, ये हमारा सोर्स है, राइट? For j in city, neighbors, neighbors, neighbors within threshold. For j in range you can say n again. ये हमारा cities है. If distance of I से j is less than the distance threshold, अगर ऐसा है, then cities of I dot cities of I plus is equal to 1 कर लो, and इसको कर दो default dictionary. Default dictionary भी क्या करनी है? We can say city से 0 for city in range, right? Now we have the answer भी ढूंढ लेते हैं. Result is equal to none. Minimum neighbors is equal to infinity. ये करने के बाद I can say if cities of I, do I even need to store it? I can just say within threshold. Then I can go within threshold equal to 0. Minimum cities चाहिए ना? Smallest number. If within threshold
कितनी cities are within threshold? This is less than the minimum neighborhood. अगर ऐसा है updated with कैसे minimum threshold is equal to within threshold, right? And then result is equal to I. ये सिटी थी अपनी, वरना अगर ये इक्वल हुआ if these are equal and अच्छा मैं तो ऑर्डर में चल रहा हूँ तो नया है तो रिजल्ट इज इक्वल टू आई एट द एंड ऑफ द डे यू कैन रिटर्न अ रिजल्ट एक्सपेक्टेड जीरो आउटपुट का 0 से 2 के थ्रेशोल्ड में 1 है तो साला ये 0 क्यों है 1 2 तो सिटी 3 रिटर्न करिए क्या अच्छा ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है एंड डिस्टेंस ऑफ v से लेके u भी है w ओके अभी भी हम कराऊंगा अच्छा क्या मेरे को खुद की सिटी नहीं काउंट करनी है एंड आई इज नॉट इक्वल टू j तो वो अपना एक नेबरिंग सिटी है विद इन द थ्रेशोल्ड राइट वरना तो आई नाउ नो कितनी थ्रेशोल्ड सिटीज है विद इन द थ्रेशोल्ड्स अपने मिनिमम नेबर से ज़्यादा है तो मिनिमम अच्छा व्हाट हैव आई इवन रिटन थ्रेशोल्ड मिनिमम नेबर्स मिनिमम नेबर अगर तुम अपने मिनिमम नेबर जो हमारे पास पहले थे उससे भी कम मिला तो अपडेटेड है अगर सेम मिला तो बिगर नंबर है ओके आपके दोनों ही गलत आ रहा है हाँ तो इसमें 1 आ रहा है जो फाइन लेकिन तुम 0 कर रहे हो दैट इज फाइन आ रही है क्या एग्जैक्ट चाहिए क्या एग्जैक्ट नहीं सिटी 0 1 पे जा सकते हैं 2 पे जा सकते हैं करेक्ट 1 से 0 have two neighboring cities as a but you have to return ठीक है the figure out this करके neighboring cities ठीक है सिटी 0 अच्छा सिटी नंबर 0 है ना
हाँ नहीं ठीक है ठीक है। तो मैं रिजल्ट ही तो रिटर्न करा रहा हूँ। Why does he think one is the output? Let me think. Print I comma within threshold क्या है? क्या हक दिया मैंने? अच्छा लेस देन इक्वल टू होगा। लेस देन इक्वल टू ओके अच्छा जी। नाइस नाइस। लेट्स ट्राई एंड सबमिट। ओके लवली। 403 एमएस आया है विद फ्लड मार्शल। राइट। what if I'd go for dice class. So I make a function dice class में स्पेलिंग दीजिए। dice class जो भी होगा जो जिस नोट पे स्टार्ट है सो उसके लिए एजेंसी लिस्ट एक बार बना लेते हैं विच विल बी नथिंग बट विच विल बी नथिंग बट क्या फॉर यू एजेंसी लिस्ट बना लेते हैं डिफॉल्ट लिस्ट का फॉर यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इमेजेस एजेंसी लिस्ट में ऑफ यू में प्रिंट कर दो वी कॉमा विद एंड एजेंसी ऑफ वी में डाल दो यू कॉमा विद डाइस प्लस जो भी सोर्स है डिस्टेंस इज इक्वल टू n float of infinity into n distance from this source is equal to 0 for क्या क्या for अब क्या आएगा अगला for में वही चो क्या आएगा for में okay so for this uh, priority distance on the source while priority q तो प्रायोरिटी क्यों लगा लिए अब हमको अंदर जाना है हमको करना है कॉस्ट कॉमा इज इक्वल टू क्यू डॉट q फॉर प्रायोरिटी क्यू राइट then I can say for next node in adjacency list of node if distance of this node is greater than cost plus the next node comma weight cost plus weight तो क्या करें डिस्टेंस और नेक्स्ट नोड को अपडेट कर दो एज कॉस्ट प्लस वेट एंड प्रायोरिटी क्यू में डाल दो ही
डॉट ही पुश में डाल दो कॉस्ट प्लस वेट कॉमा नेक्स्ट नोड, राइट, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे अब इसके बाद यू कैन जस्ट रिटर्न आर डिस्टेंस। अब बाहर आओ, डिस्टेंस निकालो सिंपली, राइट, फॉर सोर्स इन रेंज एन, हर उसको सोर्स बनाओ, डिस्टेंस डॉट अपेंड जो भी डाइस्क्राइब में आ रहे हैज विथ सोर्स, वो अपेंड कर दो डिस्टेंस। अब हमारे पास वही सेम डिस्टेंस आ गया, हमको वही काम वापस करना है। तो फॉर स्टार्ट इन रेंज इन, फॉर नेबर नेबर इन रेंज एन, within threshold neighbors is equal to 0 if neighbor is not equal to start and distance of start से लेके neighbor is less than the distance threshold, then within the threshold neighbors we have one more, right, within these we have one more if it is less than or equal. Otherwise, can you say, my guy, can you say, my brother, can it be said, can it be said, और रिजल्ट करना पड़ेगा, minimum is equal to float of infinity and result is equal to none if within the threshold neighbors is less than the minimum, then update दोनों, result start अगर less than equal भी है minimum के तो वो कर दो, and अगर it is less than तो minimum भी update. Yeah, I can just say minimum is equal to minimum of comma distance, right? And then I can just return result dice class. Okay, and distance. शायद देखते हैं क्या बेटर टाइम को टाइम देते हैं हमें. Okay, Dijkstra gave a much better time than Floyd Marshall. Dijkstra gave a better time than Floyd Marshall. Yeah, okay. Good to know, good to know. And with this we can increase one more. तो मेनली शॉर्टेस्ट पाथ की 4 थी. अगर सबके सेम वेट्स है तो तुम BFS कर सकते हो, राइट. सबके अगर सेम वेट्स है तो BFS कर सकते हो, और अगर सेम वेट्स में नेगेटिव हुआ तो जो भी. अगर सारे पॉजिटिव वेट से यू कैन डू डाइस. अगर एक नेगेटिव वेट है यू कैन डू बिल्कुल. तो अगर तुमको सारे सोर्सेज से चाहिए देन ऑल्सो यू कैन डू डाइस ओनली, बट अगर नेगेटिव वेट है यू हैव टू गो टू थर्ड मार्क.
You have to go to third mark. Learning में तो कुछ connected components का ऐसे DSU का I guess अब आया है DSU is also an important part of your graph. I guess जो अब start होगा minimum spanning tree. Although अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना कितना हो गया बहन चोद भाई मेरे चारों के चार सवाल हो गए तो मेरे को लगा था बढ़िया रैंक बनेगी व्हाट द फक सिर्फ 16 प्लस हुआ मेरा ओ हेल नो मैन ओ हेल ना बहन दिस इज क्रेजी दिस इज एक्चुअली सम क्रेजी शिट मेरा बेस्ट अभी तक का ये था मतलब रैंक वाइज रेटिंग वाइज तो ये है बट मेरी बेस्ट रैंक अभी तक 1336 आई है आई थॉट फॉर श्योर मैं चारों सवाल करेगा मैं कितने ऑल किल्स थे ओनली 454 एंड इसमें इसमें 2000 से भी ज़्यादा 2500 ऑल किल्स यू हैव टू बी जोकिंग मैन या श्योर मैन ये बंदा एकदम असली है और वो अपने कमेंट्स में इमोजी भी डाल रहा है श्योर अब वो सारा कमेंट्स हटा रहा है ओ हेल ना मैन एंड यू वांना से कि ये यू वांना से दिस इज एंड इस यू वांट मी टू 7 सवाल बहन चो टू कंटेस्ट में ये रैंक 2 तो बहन चो सीधे 2000 पहुंचा दिया इसे होली फक मैन बट आई डोंट नो मैन आई थिंक 2000 से तो बहुत बेटर रैंक डिजर्व करता हूँ मैं आई थिंक 3 डिजिट में होनी चाहिए एंड 16 का मैं 16 डिसअपॉइंटिंग तो ये स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना टेक लाइक 10 मिनट एंड आई विल बी बैक इन 10 मिनट से 15 पे जा रहा हूँ
Okay, gang, I'm back. I am back. तो कंटिन्यू करते हैं. वेटेड अनडायरेक्टेड एंड कनेक्टेड. वेटेड है अनडायरेक्टेड और कनेक्टेड, इसमें मतलब एक ही कंपोनेंट है. With V vertices and E edges, your task is to find the sum of weights of the edges in the minimum spanning tree of the graph. The graph is provided as a list of edges of the particular minimum spanning tree. What is कुछ होता तो हमें भी minimum spanning set of edges are weighted and directed so that I can call the vertices the lowest possible edges. So I want all the edges. I want all the edges with the lowest possible sum and all vertices are connected. I got no clue, but सोचते हैं जरा. हजार. Even if I fucking do a dice crash, right? Even if I do some kind of BFS, BFS, right? And अगर मैं फ्लॉयड मार्शल लगा के हर एक से वो स्पेस का डिस्टेंस निकालूं, then can I say कि मान लो मेरा स्टार्टिंग जीरो है, राइट? जीरो मेरी स्टार्टिंग, तो जीरो से सबसे लोएस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट. तो साइकिल बन जाएगा, लेकिन बन सकता है. आई हैव नो. एटलीस्ट ये दो चीज़ें पता है मुझे. उसका भी सुना था, भूल गया. ओके, मेरा डीपी करने को नहीं. रेवन कार बहुत बेकार है क्वालिटी. ओके, कोई बात नहीं. वी हैव हम्बल बिगिनिंग, तो आई गेस शुगर डू वाला भी करना है. तब करूँगा. आई गेस आज ही कर लूँ. बट वीडियो देख और उसको दे दूँगी. Hope you guys are doing extremely well. So in this video, we're going to learn about minimum spanning tree, which is more commonly known as MST. So in order to understand minimum spanning tree, the first thing that you need to understand is what is a spanning tree. So you will be given an undirected weighted graph. So the edge will. कैन आई डू वन थिंग? मेरे को एक आइडिया है. बस कोई भी ग्राफ है,
मैं सारे एजेस को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दूंगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर मैं हर एक एज को निकालूंगा और चेक करूंगा, इज दिस इज दिस ग्राफ इस एज के बिना, इज दिस स्टिल कनेक्टेड और नॉट, इज दिस स्टिल कनेक्टेड और नॉट। अगर है तो उस एज को सक्सेसफुली हटा दे, नहीं है सो वी नीड टू कीप इट। ऐसे करते करते आई विल डू इट एवरी हर बार, राइट। चेक करने के लिए मेरे को कितना लगेगा, डीएफएस लगेगा, राइट। डीएफएस को इतना टाइम लगता है ऑफ वी प्लस ई, राइट, एंड वी प्लस ई इज वी स्क्वायर, राइट। एंड ये मेरे को कितनी बार करना पड़ेगा, फॉर ईच एंड एवरी एज के लिए, फॉर ईच एंड एवरी एज, for each and every edge, for each and every edge, for each and every edge, for each and every, for each and every edge. आई थिंक ये फिर लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इट वुड बी 1000 into that 10⁶, 10⁸8, हम रेशो टीएल ही आएगा। लेट्स ट्राई दो, लेट अस ट्राई। तो डिफाइन डीएफएस ज़रा करूँ मैं, आई नीड द नोड, आई नीड द विजिटेड, क्योंकि इसमें ग्लोबल नहीं करूँगा मैं। देन आई हैव टू सीव, देन आई visited dot add node। इनमें मेरे को चाहिए मैं क्या क्या विजिट कर सकता हूँ, राइट। फॉर नेक्स्ट नोड इन एडजेंसी ऑफ नोड, एडजेंसी ऑफ नोड, इफ नेक्स्ट नोड नॉट इन विजिटेड, डीएफएस कर लो, एंड उसके बाद कैन आई जस्ट रिटर्न द विजिटेड, आई थिंक आई कैन। नाउ आई नीड अ इज कनेक्टेड नोड, visited is equal to set of a node, सेट ले लो, या विजिटेड इज इक्वल टू डीएफएस करो इस नोड से। इस नोड से अब तुम क्या क्या विजिट कर पा रहे हो, राइट, क्या क्या विजिट कर पा रहे हो। इफ len of visited is equal to v return true, और ना वी कैन रिटर्न फॉल्स, राइट। अब हमको बनानी है एडजेंसी लिस्ट, इज इक्वल टू डिफॉल्ट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट फ्रॉम सिलेक्शन इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्शनरी, राइट। फॉर यू it's undirected, so it's undirected, so you come out wn agency list, agency of u dot append v comma w, agency of v dot append। अच्छा, उसके तो मेरे को नई एक एजेंसी लिस्ट बनानी है ना हर एक। तो एक काम करता हूँ, तो डीएफएस के लिए मेरे को एजेंसी लिस्ट भी चाहिए, एंड इसमें भी चाहिए मेरे को एजेंसी लिस्ट।
node comma set emergencies. Define make edges. And then काम के default dictionary बनाओ list की. Then for you make manager agency of you dot append v comma wait and agency of wait dot append you comma wait, right? And then we can return our agency. अब edges को sort करो. P is equal to lambda x x of 0. अब हमें क्या करना है, इसको हटाने की कोशिश करो. For edges, for edge in edges, never mind, we can say for I in range n. अच्छा, बस साथ साथ में को हटाना तो दिया. Needed. इनिशियली सारे चाहिए हमें. Into u, right? Into student of edges. Then we can say for I in range n. n नहीं, len of edges. तो सबसे पहले क्या करो, I कर सकते हो. Right. So remove this edge. Remove this edge. So should I remove this or not? अब ये भी n स्क्वायर का ऑपरेशन है. ओके, तो उसको रिमूव करना ही अगर हैंशोट n स्क्वायर है. तो एक h को रिमूव कराना है n स्क्वायर में. फिर एक और o ऑफ n के लिए भेज दिया. आई थिंक सो. So new edges is equal to edges dot copy. ओके, अब तो थोड़ा गैंग गैंग हो रहा है शायद. आई डोंट नो डू दिस वन. हाँ, आई डोंट थिंक सो, शायद चलेगी.
क्योंकि मान लो अगर 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 मान लो 1 से लेके 10 तक था एंड इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था 20 था, एंड 1 से लेके 5 एंड 5 से 10, लेकिन इसका कॉस्ट क्या था 15 एंड देन 10, राइट। सबसे पहले ये वाला वेट आएगा क्योंकि इससे पहला जस्ट बोलूँगा ये हटा दो 2010, 2010 हटा दिया। सो 2010 हटाने से इज इट कनेक्टेड, आई विल से यस, यस इट इज कनेक्टेड, यस इट इज कनेक्टेड। एंड सम ऑफ द वेट्स क्या है 25, राइट। लेकिन अगर मैं 15 हटाता तब भी कनेक्टेड था, सम ऑफ द वेट्स वर द वेट्स वर 50, 10 हटाता तो 35, ओके। तो was 20 हटाना द वेट्स, इट इज still right, so but one जो भी है, अब मान लो मैंने फिर ये हटा दिया वाला, राइट। सेट पकड़, सेट पकड़, तो अब क्या होगा 20 से आगे बढ़े हम 20 से आगे बढ़े, फिर सेट है मैम। तो मेरे को ऐसा चाहिए कि अगर मैंने ये हटा दिया तो मैं ये दोनों नहीं हटा सकता, आई थिंक ऐसा नहीं होगा। फिर ट्राई कर, नीडेड हटाओ, आई मान लो जी, फाइल आई लेस देन ऑफ, तो दिस आई डोंट थिंक आई यूज, राइट। तो अब क्या होगा, मैंने बोला बढ़िया है ना, क्या हमको ये चाहिए, न्यू एडिट इज इक्वल टू एडिट डॉट कॉपी डॉट पॉप, new edges dot copy and new edges dot pop आई, एन स्क्वायर होगा। न्यू एडजेंसी लिस्ट, जो मेरे नए एड्रेस पर उसको भेज दो, मेक एडजेंसी लिस्ट और दिस न्यू एड्रेस, मेरे पास नई एडजेंसी लिस्ट भी आ गई। इज इट स्टिल कनेक्टेड, इज इट स्टिल कनेक्टेड, तो इफ इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, न्यू, इफ इज कनेक्टेड, हमारा जो न्यू एड्रेस है connected with the node to 0 है, and these are the new edges, 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 0 है, and th
और एजेंसी लिस्ट भेजनी है, न्यू एजेंसी लिस्ट है। ऐड स्टिल कनेक्टेड मतलब हम हटा सकते हैं, तो गैंग बैंग हटा दो। तो जो मेरे एजेस है वो न्यू एजेस के बराबर कर दो, क्योंकि हटा सकते हैं, राइट, हटा सकते हैं। अब आई प्लस वन नहीं होगा क्योंकि एक हटा दिया हमने, तो आई को सेम नेक्स्ट पे चला गया, एंड देन वी कैन जस्ट कंटिन्यू हियर, वरना आई प्लस इज इक्वल टू वन, वरना भी ये नहीं हटा सकते हैं, इसको एजेस नहीं हटाए के एजेस सेम टू सेम रह गए, मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड, है ना, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, एंड देन एट द जो एजेस बचे वो हमको एकदम चाहिए चाहिए, रिटर्न सम ऑफ लिस्ट ऑफ ई ऑफ टू, कम से कम दो वर्टेक्स, आई थिंक नहीं चला, फॉर ई इन एजेस वाई, क्यों देखो, कम से वर्स्ट केस में कम से कम 1000 एजेस है, 1000 एजेस, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 इंटू 500, जो कि हो गया 5000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख मतलब 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, राइट, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ये लूप चला 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, ये लूप किस लिए चलेगा, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 मतलब 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, मतलब कुकड है, ये टीएलई देगा अगर कर रहा, ब्रो कहाँ पे है क्या, देखो मैंने तो नहीं करा, कैन नॉट इम्पोर्ट दी, अब क्या है, विजिटेड इज इक्वल टू, तो एरर क्या है ये नहीं बताएगा कभी, तो व्हाट इज द फकिंग एरर, विल यू टेल मी फॉर फक से, डिस्कनेक्टेड कर दिया है, वो गणमरे एरर क्या है बहन, it's like fucking git, what do you mean dot dot dot, what do you fucking mean dot dot dot, what is the error, वो सीधी बात है, what is the error, मतलब हैंग वैंग हो सकता है, एजी डे वो एरर दे रहा होगा एजी डे पे, होली फक,
It includes नोड है मेरे पास, नोड है, सेट है, एंड एजेंसी लिस्ट है। सो इसको अगर मैं हटाऊँ, अगर क्या इन्फिनिट तो विजिटेड डॉट ऐड नेक्स्ट नोड, हम यहाँ पे कर दो सेट ऑफ, यहाँ पे कर दो ताकि मेरे को ये नोड पहले से ये और what the fuck is error in मेरे को एरर ही नहीं दिखा। I fucking hate, I fucking hate झाड़ बराबर की। नेक्स्ट नोड वेट तो चाहिए नहीं वाला। I don't need, I can go मेरे पुराने आगे स्टाइल में। अब क्या दिक्कत है हमको? Holy fuck man, these two, this guy don't fucking hate this shit. I just get fucking, अब क्या दिक्कत है इसके लिए? कहाँ पे? DFS? अच्छा, अच्छा मैं शॉर्ट में उल्टा तो कर ही नहीं रहा, रिवर्स। ओके दिस वर्क, बट आई थिंक इसका टाइम बहुत बेकार है। दिस इज ओ ऑफ ई स्क्वायर कुक, ई स्क्वायर में तो कुक हो गया। दिस इज ई प्लस ई प्लस वी प्लस ई प्लस ई, एक दो तीन चार, तो दिस इज लाइक 5 ई स्क्वायर, जो कि टीएल ही देगा। यप, बट होपफुली एटलीस्ट काम तो करता हूँ।
पूछते चैट से, is this code to get the sum of edges of MST logically correct? I don't know क्रुस्कल, मैंने क्रुस्कल कर दिया. Yes. इनएफिशिएंट है, ई स्क्वायर का है, बिल्कुल सही. सही है. मतलब अगर कनेक्टेड है तो जीरो से होगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता. हाँ मतलब अगर वन से होता वो अलग बात. लॉजिकली करेक्टेड, दैट्स ऑल आई केयर्ड अबाउट. मेरे को भी स्टार्टिंग में पता था कि दिस कोड इज इनएफिशिएंट, बट ऑनेस्टली क्या है, लॉजिकली जो मैंने सोचा है वो सही है नहीं. सो अब सोचते, दिस इज समथिंग रिवर्स क्रिस्टल, आई डोंट नो. आई डोंट हैव नो क्लू क्रिस्टल होता भी क्या है. बट एनीवेज, सो अब हाउ कैन आई फाइंड द फकिंग मिनिमम स्पैनिंग? मैंने सारे बड़े बड़े वेट्स को हटा के देख लिया. अब कैन आई ऑप्टिमाइज दिस कोड को? ऑप्टिमाइज मतलब, ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज मतलब कि भाई तुम्हारा एक कोड तो है बढ़िया, वहाँ पर दो पार्ट, दो ईज है, एक ई तो चलेगा. तो लाइक यू आर ट्राइंग टू रिमूव एवरी सिंगल एज. इज दिस अ गुड थिंग और बैड थिंग? मतलब क्या मैं इसको उल्टा करूँ कि सबसे छोटे वाले एजेस को डाल के दे? इफ यू फकिंग इंक्लूड द स्मॉलेस्ट एज, इंक्लूड द स्मॉलेस्ट एज, एंड जैसे तुम्हारा पहला कनेक्टेड हो जाए तुम उसका वो कर दो. इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, सबसे छोटा एज उठाओ, सबसे छोटा एज उठाया, न्यू एजेस क्या होगा? तुम कितने एजेस तक ले रहे हो, राइट? सो फॉर आई इन रेंज, रेंज लेन ऑफ एजेस, ये नहीं करना है. नई एजेंसी लिस्ट क्या होगी अब? लेकिन यही है, दिस इज ऑल्सो ई स्क्वायर ओनली, एजेस ऑफ ई स्टार्टिंग से लेके आई तक, लेकिन आई इंक्लूडिंग है. अगर कनेक्टेड है ये, हाँ, if connected है, then we can return this thing. You can just return this thing, बस और कुछ नहीं करना. Let's try, क्या ये रन करने में चल रहा है? Around range, okay. Your output 9, expected output of 4, तो ये नहीं चल रहा. Let's see example से, 0 1 2 3, 0 1 2, 0 से 1 5, 1 से 2 3, 0 से 2 1. बेस्ट तरीका क्या है? 5 हटाओ, मतलब. लेकिन मैं क्या बोलूँ, पहले 1 डालो, फिर 3 डालो. हाँ देखो जनता स्कूल में भी तो पहले सबसे छोटा वेट सबसे पहले आएगा, राइट?
तो सबसे छोटे वेट के लिए अगर कनेक्टेड मिल गया मेरे को तो सारे सबसे छोटा वेट क्या आएगा 1 0 2 कनेक्टेड नहीं है, वरना उसके बाद एक और आ जाएगा ये एंड ये, उसको कनेक्टेड बोलना चाहिए कि भाई कनेक्टेड है। इज दिस इज दिस लॉजिकली करेक्ट? मेरे को समी चाहिए। अच्छा, फॉर ई एन एजेस ऑफ आई प्लस वन। ओके, दिस गिव्स लेट्स ट्राई। रॉन्ग आंसर आता है या टी एल आता है? रॉन्ग आंसर आया। दिस नो। सही बात है। माई लास्ट माई अदर वन वेयर आई रिमूव एजेस, दैट वाज करेक्ट। अच्छा, ओके, ठीक है। सो ये तरीका काम नहीं कर रहा। सो हाउ कैन आई फकिंग ऑप्टिमाइज इट? आई वॉन्ट नो क्लू, क्योंकि इसके जो दो पार्ट्स है राइट, एक तो है ट्राई टू रिमूव ईच एंड एवरी एज। आई थिंक स्टार्ट होना। इसमें दो पार्ट है, एक तो ट्राई टू रिमूव एवरी सिंगल एज, आई कांट डू एनीथिंग, आई हैव टू ट्राई टू रिमूव एवरी सिंगल एज। और फिर उस एज एज को रिमूव करने के बाद आई नीड टू सी कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, और उसमें भी वो ऑफ ही लगेगा। आई डोंट थिंक सो वी कैन ऑप्टिमाइज, इसका कोई अलग तरीका है, तो वो तरीका आप देखना पड़ेगा। तो आई एम गोना गिव मी अप 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का, मेरे को एक काम करना है, मैं आया।
Bye.
Okay, guys, my bad. Let's continue. And n plus 1 for n. सारा connected है. इसमें ये algo बता ही नहीं रहा. तो okay, so the theory था. Let's see friends and उसको कैसे करते हैं. हमको वही चाहिए. Okay, so I think e square से e log e कुछ हो रहा है. うん、अच्छा. 2 and 1.
अच्छा, सही है। 210 विजिटेड है पहले से ही। ऑलरेडी विजिटेड। ओके। 1 सेकंड दो जरा।
ओके सॉरी गाइस, बहुत टाइम लगा। ओके, we got it. Let me recheck the results. I hope so. So let's try. But what does Prim's algo do? Doesn't it also take? Doesn't it also? तो मेरे इस जो मैंने इसमें करा था उससे पहले वाले में, उसमें क्या था, आई वॉज नॉट चेकिंग फॉर, मतलब अगर पहले से विजिट वो एज नोड आ चुका है तो मैं वापस उसे कंसिडर नहीं करूँगा। दैट इज द पॉइंट, राइट? नाउ नेक्स्ट, तो मैं अगर वो तो मैं कर लूँगा, और द नेक्स्ट थिंग इज ये तभी ई स्क्वायर ही रहेगा, राइट? क्योंकि आई एम मेकिंग अ न्यू एडजेंसी लिस्ट एवरी टाइम, आई एम डूइंग एक और डीएफएस एवरी टाइम, आई कैन नॉट डू अ न्यू डीएफएस एवरी टाइम। उसका क्या तरीका है? डीएफएस करते करते एजेस के साथ तुम करो, जो कि प्रिम्स आएगा। ओके, what do you do here is, what you do here is, okay, first of all, let's find it from import heap, import heap, right? अब अगली चीज़ क्या चाहिए heap के बाद? Now of course the heap के बाद the next thing I want is
What is the next thing that I want? Tell me. What I want is try to queue, read queue, and is also queue. Try to queue this part, then wait 0 and then -1 as a feeling, right? Now I can say why priority queue? पता नहीं priority क्यों है? अब मेरे को visited भी चाहिए. Visited is equal to false into what is it? Visited of visited of 0 equal to true. Right? अब देखते हैं जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू है टेक आउट नोड. क्या करो? टेक आउट नोड. फिर एजेंसी लिस्ट बना देते हैं. तो उसके लिए हमको चाहिए फ्रॉम कलेक्शन import default dictionary. Agency list is equal to default dictionary. Give it a list and then for u comma v comma w in edges agency list of u dot append v comma w and agency of v में append कर दो u comma w. राइट, दैट्स इट. वाइल अब जो तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू है टेक द एजेस, टेक द गॉडडैम एजेस. अच्छा तो अभी ये विजिटेड नहीं हुआ है आई थिंक. यप. सो सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू से कॉप करो. प्रायोरिटी क्यू वेट कॉमा नोड कॉमा पेरेंट इज इक्वल टू हीप क्यू डॉट हीप पॉप अपनी प्रायोरिटी क्यू से. राइट. अगर ये नोड हमने विजिट कर रखा है इफ विजिटेड ऑफ नोड देन जस्ट कंटिन्यू अगले पे पढ़ो. वरना it's the first time you are visiting this node. It's the first time you are visiting this node. सम इज इक्वल टू 0. सबसे पहले सम में जब चला जाएगा सम प्लस रिजल्ट लिख लो. रिजल्ट इज प्लस इज इक्वल टू वेट. इस वेट से पहुंचो तुम. अब इसको विजिटेड मार्क कर दो. विजिटेड और नोड इज इक्वल टू ट्रू. इक्वल टू ट्रू. नाउ 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 नाउ. गुड जॉब मैन, गुड जॉब. अब क्या करो? ये जो मेरी प्रायोरिटी क्यू है अब ये इस नोड को मैं पहली बार आया हूँ. एडजेसेंट नोड्स डालो. एडजेसेंट नोड्स डाले फॉर next node in adjacency of this other node. Right. Next node. If next node अभी हमने visit नहीं करा है. If not visited of next node, that means we need it. Need it. Keep q dot keep push. What do you want to push, man? Push the m. Push the wait for next node, comma wait.
तो उसमें हमको पेरेंट चाहिए नहीं, क्योंकि हमको एक्चुअल एमएसटी नहीं बनाना है, हमको सिर्फ वो चाहिए। सो आई थिंक नो। हीप क्यू डॉट हीप पुश, थोड़ी वाला पुश जो वेट है, कॉमा ट्राई टू क्यू में पुश करो। क्या पुश करना है? वेट कॉमा क्या क्या करना है? वेट के साथ मिक्स। अनदर एंड ऑफ द let's see what it works. So I can say this as string 1.
उससे ज़्यादा बेकार सवाल मैंने भेजा था। होली शिट, होली शिट। देखो आते हैं डीएसपी बाई यूनियन मेंबर है, रैंक में सबसे जीरो की सेम है तो किसी भी किसी में भी डाल दो, एक की बढ़ा दो। अगर अलग रैंक है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर दोनों की अलग अलग रैंक है तो छोटी रैंक जाके बड़ी रैंक में जुड़ जाएगी, राइट। एंड देन रैंक में इंक्रीज नहीं होगा। विदाउट साइज, सबका मान लो स्टार्टिंग में वन वन साइज है, सब अलग अलग है। जब भी जुड़ेगा तो छोटा वाला जाके बड़े में जुड़ जाएगा, एंड बड़े का साइज भी प्लस हो जाएगा जो भी छोटे से, राइट। एंड अगर सेम हुआ तो कोई भी किसी में डाल दो। तो इन दोनों सवाल के लिए I'm gonna it's a bit cheating but I'm gonna do this. Now let's see क्रिस्टल क्या है। मिनिमम अराउंड क्वेश्चन। यूजिंग क्रिस्टल करना, कंस्ट्रेंट सेम है प्रिम्स के, तो प्रिम्स से भी कर सकते थे। लेट अस सी, लेट मी टेस्ट माई सेल्फ। मेरे को प्रिम्स याद है नहीं। होम कलेक्शन, import default dictionary, import C3, agency list is equal to default dictionary of list for u comma v comma agency of u dot append v comma w, agency of v dot append u comma w। राइट, agency list बन गई। visited is equal to false into what is tried to is equal to क्या है, try to wait comma भाई मेरी प्रायोरिटी क्यों है, wait comma node is equal to q dot q for प्रायोरिटी क्यों is visited of node। we can just continue, वरना रिजल्ट लिख लेते हैं। वरना visited of this node is true, visited of this node is true, and we have successfully visited insert sum plus is result, result plus is equal to wait, and then for next node comma whatever we need the wait, but we need the next node comma wait in agency of this node. What you do is if not visited of next node तो विजिट कर लो भाई। तो क्या करो, विजिटेड में डालो, विजिटेड में नहीं डालना, प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश प्रायोरिटी क्यू एंड नाउ जो वेट से आए
Like this node pair, right? And now we can return result. And this is working. Absolutely, but that is not what we want, right? What we want is critical algorithm. So वीडियो देखने का टाइम आ चुका है, वीडियो देखने का टाइम आ गया है। Yeah, let's Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So today we will start be this. learning about the Kruskal's algorithm. But wait, before starting this video, please go back and watch my video on disjoint set. It's a bit Okay. long video, but you'll get a lot of clarity about the concept that will be used in order to solve the Kruskal's algorithm. If you do not know disjoint set, you will not understand anything. I'm assuming you have seen my disjoint sets video, and then I'll be teaching you Kruskal's algorithm. Right before this video, whichever you'll find in the graph series, is the is the disjoint sets video. So what does Kruskal's algorithm help us to find? Tells us to find the minimum spanning tree. Now, what is a spanning tree? All of us know it. We have already discussed it in our previous lectures, right? So this is the given graph, and you have to find the minimum spanning tree. We know we can implement Prim's algorithm to find it, and we have done it in the previous videos. But in this video, we will be applying the Kruskal's algorithm in order to find the minimum spanning tree of this particular graph. What is the minimum spanning tree? If this graph can be represented in n nodes and n minus 1 edges, such that you can reach from one node to every other node. That is what you call as minimum spanning tree. So you will be given a graph like this. You might be given the adjacency list. You might be given edges. You can be given anything. The first task that you need to do is sort all the edges. Remember this. Sort all the edges according to weight. Very, very तो important. ये जो मैंने According to स्क्रीनशॉट weight, you लगाया have to था sort उसमें भी all the edges. So इस let's तरह था। quickly write down all the edges and sort them according to weight. So once you've sorted all the edges, you'll find all the edges like this, and you see the minimum weight at the front, and then it keeps on increasing. Okay, so you know the data structure disjoint set that we are going to use. What does disjoint set provide us with? It provides us Union with from two things: find ultimate parent, and it also provides us with union. union by rank. And we know if two guys belong to the same component, they will always have the same ultimate parent or the boss, right? So remember, initially, when you declare the disjoint set with all these nodes, so over here we have 6 nodes. If you carefully observe, if you define a disjoint set with 6 nodes, everyone will be a single guy. Everyone will be a single guy with the parent pointing to themselves. So everyone is single with the parent pointing to themselves. So the first node is what you take. So let's quickly take the first node, which is saying 1 comma 4. So you say, okay, 1, 4. Who is your ultimate parent? 1 says 1, 4 says 4. So do they belong to the same component? No, No? they do not belong to the So same we need to component. join So what them. you'll do is you will go ahead and say, okay, since they do not belong to Join the them. same component, I can take it and this will be part of my MST because this is the most minimal edge सही in बात the है। graph. So let's take it, Agreed. right? So I've taken it. Perfect. Next is 1 comma 2. So you have a 1 and you have a 2. So 2's parent is himself and 1 is this component. Do they belong to the same component? Again, disjoint set will say you, no, they do not belong to the same Join them. component. So you'll go ahead and update 1 comma 2 with the edge. So this will also be a part of your MST. And you can also keep on counting the weight. The weight will be 1 plus 2 because there are 2 edges which have been added. So this is done. Next is 2 comma 3. This time there is 2 who will have an ultimate parent, and there is 3 who will have an ultimate parent as 3 itself. 3 has the ultimate parent. I can go ahead and next one to a same component. You can already reach everyone. Like every node can be reachable to every other node. So what's the point of making a cycle and introducing an extra edge? Because our goal is to find minimum. So including an extra edge will not help us, right? Put in. So we have a 3, we have a 4, and they definitely belong to the same component. Disjoint set will again help you to find this. So you'll not add this because there's no point in adding this. We'll go ahead and 1 and 2 is 4 and now 7. Component, so not to be taken. What's the next? 4 comma 5 to the 4 and the summation. Yes, Fine. it I hope was you've the understood the easiest entire explanation of algorithm I Tuskel's have. Tuskel's was the easiest algorithm I have seen. Okay, let's code it up. Let's code. Tuskel is easier than Prims. I'm gonna say it right here, right now. I said it first, you heard from me. I was the originator of this syntax. Define find, you need the node. If parent of parent, parent of node is not equal to node, then parent of node is equal to find of
find parent of this node, yeah, and then we can return. Okay, now we can do node 1, node 2. Node 1, parent 1 is equal to find parent 2 is equal to find node 2. Now I say parent of parent 2 is equal to parent. अभी मैं यूनियन नहीं लगा रहा, लेट्स से क्या होता है यूनियन ना लगाने से, एंड देन क्या इंप्रूवमेंट्स हो गया फिर यूनियन में तो राइट विद दिस. अब क्या करना है, वी नीड टू सॉर्ट दीज एजेस. दिस इज सॉर्ट की इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा एक्स एक्स ऑफ 2. जिसको सॉर्ट कर दिया फॉर यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इन एजेस, रिजल्ट 0. फॉर यू कॉमा वी इन एजेस, व्हाट वी वांट टू डू, आर do these belong to the same component? Parent 1 is equal to find parent भी बनाना पड़ेगा. Parent is equal to I for I in parent 1 is equal to find, no, find of u. Parent 2 is equal to find of v. If parent 1 is not equal to parent 2, what's going to happen? They belong to different components. Union कर दो. Union of parent 1 comma parent 2. इन दोनों का union करो. And then result plus is equal to 8. And then we can return the result. I think this is it. Yeah. देखते बिना रैंक यूनिट की क्या होता है. It works. Time taken 0.38. If I introduce rank over here, rank 1, everyone has rank 1. Everyone has rank 1. 0.38. Uh, uh, अबे यार. So word no rank of size 0.3. Right? देखिए अगर मैं रैंक इंट्रोड्यूस करता हूँ तो क्या होता है. अगर इंट्रोड्यूस रैंक या यूनियन में चल जाएगा. If parent 1 or parent 2, we can just return, we don't care, कुछ नहीं करना में. वरना if rank of parent 1 is greater than rank of parent 2, parent 1 की रैंक ज़्यादा है. parent 1 has a higher rank. What does parent 1 has? Is strong. parent 2 जुड़ जाएगा. तो parent of parent equal to parent 1. Right, LF. Rank of parent 2 better है. Parent 2 is better.
तो पेरेंट वन को जुड़ना पड़ेगा। एल्स पेरेंट ऑफ अगर दोनों की सेम रैंक है तो पेरेंट टू जुड़ गया पेरेंट वन में, पेरेंट टू जुड़ गया पेरेंट वन में, एंड देन रैंक ऑफ पेरेंट वन दैट इज इक्वल टू वन, राइट। दिस इज विद रैंक्स। तो वैसे जीरो रखो वन रखो कुछ पड़ता। ओके टाइम तो कम लगा है 0.3, रैंक से लगा है 0.23 वर्ड भाई। अब अगर मैं साइज पे रखूँ, साइज सो अगर साइज वन इसका ज़्यादा है तो पेरेंट इसमें जुड़ेगा, एंड साइज ऑफ पेरेंट वन प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ पेरेंट टू, राइट। अगर उल्टा हुआ तो साइज ऑफ पेरेंट पेरेंट वन जुड़ रहा है पेरेंट टू में, पेरेंट टू का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ पेरेंट प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ पेरेंट वन, वरना पेरेंट टू जुड़ रहा है पेरेंट वन में। सो पेरेंट लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगेगा बाय साइज 0.31। तो नो रैंक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो 0.6 अगर साइज से करा तो 0.31, रैंक से तो रैंक was the best 0.23। ओके द मेन थिंग इज ये दोनों इससे छोटा है, वैसे तो गुड थिंग आई वांट टू सी दैट। सो वी कैन स्टॉप दिस एंड टू क्वेश्चन टू let's do our DS। यप तो 25 सवाल होगा, 24 सॉरी। आई गेस एक और सवाल करके मैं बंद कर दूंगा आज के लिए। टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड, टू मेक ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड मतलब हमको मिनिमम कनेक्टेड चाहिए, दैट इज व्हाट वी नीड राइट। या ये साली DSU से भी हो सकता है। मान लो पहले मैंने DSU लगाया सबके कंपोनेंट्स निकाल दिया राइट, अब डू आई सी कि सबके एक ही कंपोनेंट है या नहीं, आई एम गोना बी लाइक नहीं है, नहीं है, नहीं है, दैट्स अ बैड थिंग। तो हमको कुछ मतलब आंसर तो जीरो नहीं है, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, तो ये निकालने के लिए कहने से कि हर एक कंपोनेंट के लिए मेरे को एक तार निकालनी पड़ेगी। तो इफ इट इज इवन पॉसिबल मेरे को मान लो एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है तो एक तार चाहिए, दो कंपोनेंट्स है तो दो तार चाहिए, दो कंपोनेंट्स है तो दो तार चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल और नॉट। नंबर तो मैंने निकाल दिया, नंबर मैंने निकाल दिया,
आई थिंक व्हाट वी कैन डू टू फाइंड दैट टोटल वायर्स कितनी है एंड देन एक्स्ट्रा वायर्स कितनी है। एक्स्ट्रा वायर्स मतलब अगर ये 3 का है तो इसको कितनी वायर चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, n-1, सिर्फ n-1, राइट। मेरे को एक चीज़ पूछनी है, कैन आई मेक अ connected graph with n nodes and less than n-1 edges। तो मेरे को कम से कम n-1 तो चाहिए ही, राइट। मैंने देखा इस कंपोनेंट में कितनी एक्स्ट्रा वायर्स है। आई थिंक डीएसयू का सवाल है। तो मैं वो कैसे निकालूंगा कंपोनेंट, एंड इसका स्पान। आई थिंक सो डीएसयू भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली डीएसएस से काम कर सकते हैं। डीएसएस से कैसे, मेन थिंग इज कंपोनेंट में कितनी वायर्स है, मैं तो वो जान। अच्छा वो तो एडजस्ट से मैं निकाल लूँगा, उसमें क्या। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। तो डीएस, तो क्या डीएसएस हो सकता है, डीएस लगाना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज तुमने डीएसएस करा, यू कैन नॉट नो कितनी वायर्स होगी। तो डीएसयू करेगा, डीएसयू करो, फिर एडजस्ट में हम देखेंगे हर कंपोनेंट में कितनी वायर है। हमें एडजस्ट के लिए लूप लगाएंगे, ये जो भी लेफ्ट राइट है वो दोनों सेम कंपोनेंट को बिलोंग करता है, तो उस कंपोनेंट के पेरेंट के y+1 कर देंगे, टोटल एक्स्ट्रा वायर्स निकालेंगे। ओके, सॉरी, एक्स्ट्रा वायर्स, टोटल एक्स्ट्रा वायर्स के बाद निकालने के बाद हमने बोला बढ़िया, तो इतनी वायर्स हम निकाल सकते हैं यार, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। ओके, तो डिफाइन फाइन। तो लेकिन क्या मेरे को ये भी चाहिए होगा कि हर एक कंपोनेंट कितना बड़ा है, आह, मतलब कितने कंप्यूटर से एक कंपोनेंट है। Would I be needing that or no? I think so. I will be needing that. Are you? Am I for sure I need that? Think, think, my guy. Think, my guy. Think. I don't. Uh, तो यहाँ पे कौन करना है? तो ये सब तो साइज से कर लेते, उसका साइज में मिल जाएगा। ये तो आइडिया है मेरे दिमाग में। आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, कोई और तरीका है क्या यही करने का। सो आई एम थिंकिंग, मैंने डीएसयू कर लिया, तो डीएफएस करना पड़ेगा हर कॉम। तो आई कैन से काइंड ऑफ फाइंड नोड, व्हाट इज इफ parent of node is not equal to node, then parent of node is equal to find parent of, and then we can return parent of, define union,
node 1 comma node parent 1 is equal to find node 1 parent 2 is equal to find node 2 for if parent 1 is equal to parent 2 return for now if size of parent 1 is greater than size of parent then parent of parent of parent 2 is equal to parent select size भी चेंज करना है about that अगर parent 2 ग्रेटर है parent 1 से तो parent 1 आके जुड़ जाएगा and size of parent 2 plus is equal to size of and I can say size of parent 1 plus is equal to size of parent 2 else दोनों सेम है तो ये वाला काम कर लो राइट यूनियन भी हो गया now the next thing I have to do is for u comma v in this connection यूनियन कर दो यूनियन कर दो किसका u1v का then again for wires किस कंपोनेंट में कितनी वायर्स है can I use a default इसमें तो let's try for u comma v in it wires of find u का पेरेंट जो भी है प्लस इक्वल टू 1 एक और वायर आके जुड़ गई राइट तो नो हर कंपोनेंट में कितनी वायर्स है पेरेंट और वो तो बनाएंगे नहीं parent is equal to I for I in n and size is equal to 1 for I in right wires property now now extra wires कितनी है extra equal to 0 for I in range n if find of I is equal to I तो क्या करना है that means इसे कुछ that means computers कितने हैं component number of computers number of computers is equal to size of I right तो इतने computers हैं and number of wires is equal to wires of I extra plus is equal to number of computers sorry number of wires we only need number of computers minus 1 wire बाकी जो है एक्स्ट्रा तो ये करके मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया एंड कंपोनेंट्स कितना है
components, and then जैसे ये होगा तो components you can add components plus equal to 1. तो जितने components है return component minus 1 if say do we have this much extra wiring, if components minus 1 is that is less than equal to extra, वरना we do not have इतनी वायरिंग चाहिए, इतनी नहीं है, then minus. Okay, तो तो टाइप 100 पीस हो जाता है जिसमें कनेक्शन कॉपी करा था ना हमने. Okay, looks to be running. Let's see. Works perfect. Although 63 में काफ़ी ज़्यादा टाइम है. Although ये हो रहा है O of E में. O of C में union and O of G में, O of N में. So the complexity is O of N plus E. N plus E O of N है और V है. Can I agree to this? Okay. As long as there are at least N minus 1 connections, there is definitely a way to connect all them. अच्छा, तो स्टार्टिंग में ही इसने देख लिया. ओ, as I said, द मेन दिक्कत क्या थी वो तो मैं बता सकता हूँ. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं वो तो डीएफएस से भी निकल जाएगा बहुत आसानी से, राइट. वो डीएफएस से भी निकल जाएगा. माय पॉइंट वाज कि क्या एक्स्ट्रा वायरिंग है मेरे पास वो निकालना था. तो मैं हर कंपोनेंट वाइज सोच रहा था कि इस कंपोनेंट में और हर कंपोनेंट वाइज करने के लिए हमको डीएसपी करना पड़ेगा. बस हमको हर कंपोनेंट की जरूरत नहीं है. अगर मेरे पास एन माइनस वन कनेक्शन है तो हो सकता है ओवरऑल ऑनेस्टली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ई प्लस एन, राइट. और डी एफ एस भी ई प्लस एन ही लेगा. इसमें भी डी एफ एस right. So if I can also say if connections, if len of connections is smaller than n minus 1, इतने तो चाहिए. अगर नहीं है then we can return minus. वरना find number of components कितने हैं और वो minus 1 इसका आंसर है. define dfs node visited dot add node for next node in adjacency list of node. If next node not in visited then तो इसको visit करो. Do a dfs of this of the next node, right. And that's all I have to do. But for next node and adjacency node this is fine. adjacency बनानी है वो बना लेंगे, अभी बना लेते
agency of U dot append U, agency of V dot append U, right? Now the next thing we have to do is components कितने हैं मेरे 0 for I in range M, फिर visited भी बनाना है if I not in visited components that's equal to 1 एंड अब इसमें से जो भी है वो विजिट कर लो रिटर्न components माइनस 1 बस ये है अपना दूसरा तरीका DFS से यहाँ पर थोड़ा बहुत बेटर बट नॉट मच इसने DSP सही करा ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने DSU करा आई मीन DSU भी तुम्हें एजेस के लिए DSU करना है तो वो होती है फिर हर वर्टेक्स पे आई मीन गिव मी सेकेंड तो हर तो मेरे को एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी नीड नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट अच्छा और नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट कैसे मिलेगी उसके लिए भी तो तब भी लूप तो ही लगानी पड़ेगी ना इसके लिए लूप तो लगेगी तो लेट्स डू वन थिंग साइज की जगह बाय रैंक और रैंक बनाओ दिस ऑल हैज टू बी रैंक रैंक ये तो हट ही गया ये भी हट गया एंड यहाँ पे प्लस ये वन we did a union if the sign this is fine we did a union I don't need per component में कितना है उससे I don't care extra कितना है I can यहाँ पे say if len of connections -1 is this is less than n so return -1 otherwise कितने components है कर लिया कितने components I don't know so and then I can return this per rank okay sorry n minus okay this is the best method uh, but this is at the end of the still e plus e right n plus e whatever you want to say e plus e right मेरे को e तो लगेगा यूनियन करने इज देयर अ वे कि मैं यूनियन करते करते ही नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स को नहीं जब तक लास्ट यूनियन नहीं होगा आई डू नॉट नो कितने कॉम्पोनेंट ये DFS कर रहा है यूनियन फाइंड आउट कौन अच्छा सो दे रही सब ये कितने हैं भाई अगर तुम यूनियन कर रहे हो ओके 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 सो आई डोंट नीड टू डू स्टार्टिंग में सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो टोटल कंपोनेंट्स n है राइट
ऐसे नहीं चलेगा, वह कुछ सेल्फ डॉट कॉम्पोनेंट इक्वल टू एन, राइट। एंड देन आई कैन से जब भी यूनियन हो रहा है, अगर वो सेम उसमें है तब तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स कम हो गए, नहीं होंगे, लेकिन अगर लग रहा है तो मर्ज हुआ है, तो सेल्फ डॉट कॉम्पोनेंट माइनस एल टू वन, एक कॉम्पोनेंट जाके एक और में मर्ज होगा, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एक कम होगा, एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न सेल्फ डॉट कॉम्पोनेंट माइनस वन। And yeah, we could do it in O of E, not V plus E, O of E. Really cool. लेकिन अगर DFS करूँगा तो उसमें E में रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि V प्लस E आई हैव टू सी हर एक वर्टेक्स के लिए DFS मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, एंड DFS खुद में ही V प्लस E टाइम लगता है, बट इसमें आई कुड डू E में। रियली कूल, रियली रियली कूल। ओके, एंड इसी के साथ आज के लिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई एक्चुअली हैड रियली रियली फन। प्रिंस क्रुस्कल, बेलमन फोर्ड कैसे करता था, एन माइनस वन आइट्रेशन करो, हर आइट्रेशन में हर एजेस का काम करो, वो रिलैक्स करो। बेलमन फोर्ड सीखा, उसके बाद क्या सीखा, फ्लॉयड मार्शल, राइट। उसमें क्या था, सिंपल एन क्यूब है, डीपी लगानी है, फ्लॉयड मार्शल। उसके बाद मैंने क्या सीखा, प्रिम्स। प्रिम्स में हीप की तरह है, कोई भी एक नोड ले लो, उस नोड से स्टार्ट करो, एंड जो स्मॉलेस्ट वेट्स आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते रहो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते जाओ। क्रूसिबल सबसे ईजी है, DHU करा, अगर सारे एजेस को सॉर्ट कर दिया, एक एज लिया, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को बिलोंग करते रहो, कर दिया, बन गया। सब आज जो सबसे मुश्किल प्रिंट है कोई सीख लिया, उसमें कोई भी नोट डाल दिया, उसका वेट, उसके बाद उस नोट से मैं कहाँ जा सकता हूँ, उससे कहाँ जाया जा सकता है, वो सारा मैंने अकॉर्डिंग टू वेट हीप में डाल दिया। तो जो भी हीप का टॉप पर अगर विजिट नहीं करा है तो ये वाला एज वाला का पार्ट है, ये वाला एज अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट है, तो हमने विजिट कर लिया एंड फिर आगे बढ़े। रियली नाइस। ओके, तो आज के लिए डन करते हैं, टॉक टू यू गाइस टुमारो, बाय बाय।